Bank Cricket Stadium is all set to host another exciting game, second of the day, as Larkana takes on Peshawar in an all-important game, especially for Peshawar. This is the second game of the day. It's Peshawar taking on Larkana region. AH Group presents Jazz Super Fauzi National T20 Cup. Before we proceed, let's have a look at the points table. That's how the teams stand at the moment. Karachi Blues is at the top, 3 matches, they won 3. Lahore Whites, they played 3, won 2, and what a win that has been the last day. Peshawar, 3 matches, 2 wins. Quetta yet to win a game. Larkana also playing 2 without a win. And top 2 teams will play Super 8. Hello, good evening once again and welcome to Karachi, and this exciting day. We've already seen a fantastic game already where Lahore won a game quite comprehensively. Ahmed Shahzad playing a blinder of an inning. We're going to talk about it and more about that game. I've got Shah Faisal alongside me. Shah Faisal, बहुत ही शानदार गेम, एक मस्ट विन गेम था ये लाहौर के लिए, और जैसे अहमद शहजाद ने खेला ऐसा लगा कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई उनकी बैटिंग की। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त रन चेस था, क्योंकि जो इक्वेशन बनी हुई थी अभी ग्रुप टेबल हमने देखा, वहाँ लाहौर को ये मैच अच्छे रन रेट से जीतना था कि कराची के रन रेट के करीब जाएं। ग्रुप का आखिरी मैच कराची और लाहौर का होगा, तो लाहौर डिड व्हाट वाज रिक्वायर्ड ऑफ देम। पहले तो उन्होंने क्वेटा को रिस्ट्रिक्ट किया और उसके बाद अहमद शहजाद की बारी ने तो बिल्कुल काम आसान कर दिया। 12 ओवर्स के अंदर अंदर ये टोटल उन्होंने अबूर किया। विकेट के चारों जानिब अहमद शहजाद ने स्ट्रोक्स खेले, स्पिन, पेस, फ्रंट फुट, बैक फुट, कदमों का इस्तेमाल, आप पूरी रेंज ऑफ शॉट्स उन्होंने दिखाई अपनी, और काफ़ी इमोशनल और नज़र आए स्पिरिट में, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा सीज़न है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अभी तक परफॉर्म किया है, लेकिन ये सबसे बड़ी स्टेज है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टूर्नामेंट है पाकिस्तान का। और जो अग्रेशन नज़र आया अहमद शहजाद की बैटिंग में, ऐसा लगा कि वो मीन करते हैं। इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग थी उनके अपने लिए भी और टीम के लिए भी इनफैक्ट, लेकिन उसके साथ साथ जो रोल इखलाक ने निभाया उनके साथ, आई थिंक उनकी भी तारीफ़ करना बनती है। जी बिल्कुल, दोनों ने एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। अक्सर ऐसा होता है कि 2 ओपनर्स में से एक को लगता है कि ज़्यादा उसका अच्छा बॉल बल्ले में लग रहा है, तो दूसरे ओपनर का यही काम होता है कि वो स्ट्राइक रोटेट करें, उनको ज़्यादा स्ट्राइक दें, उनको स्टार्व ना करे स्ट्राइक से, और यही इखलाक ने जिम्मेदारी निभाई। और इखलाक का हमें पता है जब उन्हें भी बॉल अपने रेंज में मिलती है तो वो भी छोड़ते नहीं हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग स्टैंड था और तकरीबन ओपनिंग स्टैंड ने ही मैच ख़त्म कर दिया था। फैसल, उस जीत ने लाहौर की इस पूल को बहुत एक्साइटिंग कर दिया है, इस मैच को भी बहुत एक्साइटिंग कर दिया है पेशावर और लाड़काना को। पेशावर को भी ये मैच जीतना होगा और अच्छे मार्जिन से जीतना होगा। जी बिल्कुल, बहुत एक्साइटिंग सिचुएशन है, और ये एक्साइटमेंट क्रिएट की कराची की टीम ने। जो कराची ब्लूज की टीम है, जो कि उनकी सेकंड स्ट्रिंग टीम है, उन्होंने पेशावर को पहले मैच में हराया, वो अपसेट शिकस्त थी, और इसकी वजह से अब पेशावर पे दबाव है कि किस तरह वो इस मैच में आए। लाड़काना उन्हें चैलेंज ज़रूर करेंगे, लेकिन सब नज़रें पेशावर पे होंगी, क्योंकि यहाँ मजीद कोई स्लिप अप पेशावर अफोर्ड कर नहीं सकती। अभी वनडे कप जीत कर आए हैं तो उनका कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन पहली शिकस्त के बाद उनको धचका लगा है। और बड़े हाउस होल्ड नेम्स हैं, साहबजादा फरहान हैं, इफ्तिखार हैं, हारिस हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उनकी ऑल राउंड स्ट्रेंथ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है पेशावर की टीम की, वो उनकी टुगेदरनेस है और जो स्पिरिट है। वो जिस इवेंट में भी खेलते हैं उनको हराना इसीलिए मुश्किल होता है कि वो बहुत ज़्यादा जेल होकर खेलते हैं। वैसे लड़काना की बात करेंगे हम, थोड़ा यंग साइड है, जाहिद महमूद उसको लीड कर रहे हैं, ज़रा इनके नज़र डालते हैं। ज़्यादा स्टार्स नहीं है, लेकिन इनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे स्टार आप बन सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी स्टेज है, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। जाहिद महमूद पे नजरें होंगी, पाकिस्तान की तारीख के वो सबसे ज़बरदस्त और कामयाब लेग स्पिनर हैं हिस्ट्री के इस फॉर्मेट के, तो जाहिर है कि उन पे नजरें होंगी। वो अपने लोकल रीजन की टीम से खेल रहे हैं, हालांकि वो दादू से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये एक अच्छा उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अपना एक्सपीरियंस जो है वो यंगस्टर्स के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि टॉप लेवल पे जाने के लिए किस तरह की कमिटमेंट, प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, और उन्हें आज वो फील्ड पे दिखाने का मौका मिलेगा। यही इस टूर्नामेंट की खासियत है। हमने देखा है छोटी टीमों ने बहुत स्पिरिट से मुकाबला किया है, और इस टूर्नामेंट की जो एक तरह कह लें कि एक्साइटमेंट है कि हर नई टीम में आप इस एक्साइटमेंट से देखते हैं कि आपको कोई नया टैलेंट नज़र आ सकता है, और यही उम्मीद है लाड़काना से भी। और लाड़काना का मुकाबला जिस टीम के साथ है उसमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स मौजूद हैं। हारिस का अगर जिक्र करें, आदिल अमीन है, अब्बास आफरीदी हैं, लेकिन तमाम तर नज़रें होंगी वो इफ्तिखार पे होंगी कि वो कप्तान भी हैं और किस तरीके से अपनी टीम को लीड करते हैं, किस तरह से खुद बैटिंग करते हैं। जी बिल्कुल, इफ्तिखार आपको पता है कि पाकिस्तान के ज़बरदस्त प्लेयर हैं, वो जिस भी लाइनअप में होंगे तो अटेंशन उन पे होगी, जहाँ भी जाते हैं फैंस उनके गर्विदा हैं, और
जहाँ भी जिस ग्राउंड पे भी जाएंगे उनकी आवाज़ें लगती हैं, शायकीन उन्हें बहुत पसंद करते हैं जिस तरह का वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, और अब तो वो बहुत एक्सपीरियंस भी हो गए हैं। तो मेन प्लेयर हैं ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पेशावर के भी, जिसकी वजह से यही है कि उन पर नज़रें होंगी। उनका भी तजर्बा जो है वो बहुत ज़रूरी है। बड़े नाम हैं पेशावर में, लेकिन यहाँ पे भी उनके पास भी यंगस्टर्स भी हैं, तो ये एक्सपीरियंस उनके भी काम आएगा। और फैसल, ऐसा नहीं हो सकता कि इफ्तिखार ग्राउंड में मौजूद हो और हमारी उनसे बात ना हो। अकील सामर मौजूद है थोड़ी देर पहले इफ्तिखार के साथ। इफ्तिखार, आप बड़े बिजी रहते हैं, सारी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन फ़ौरन आकर अपने आप को आपने अवेलेबल किया है डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए। तो किस अंदाज से अपने आप को फ्रेश और रेडी रखते हैं ऐसी सारी क्रिकेट के लिए? जो आपकी ड्रिल्स हैं वो हमारे नौजवान जानना चाहेंगे कि किस अंदाज से आपका रजीम रहता है अपने आप को फिट रखने के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह यहाँ पे डोमेस्टिक T20 हो रही है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट था T10 में भी, मगर मैंने उसको कैंसिल किया है। आके यहाँ पे इस डोमेस्टिक में हमने पाकिस्तान खेला है, हमें पाकिस्तान की वजह से हमें इज़्ज़त मिली है। तो हमें भी चाहिए कि एज ए प्लेयर, एज ए प्रोफेशनल अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को और अपने पाकिस्तान को इज़्ज़त दे। जो पेशावर के प्लेयर्स आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, वो नॉन स्टॉप हैं, और यही आपको दिख रहा होगा आने वाले मजीद प्लेयर्स में भी। तो किस अंदाज से देख रहे हैं जो नई नस्ल आ रही है? क्योंकि अभी तक हमने अंडर 21, अंडर 15 हर लेवल पे बड़ा टैलेंट देखा है खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर से इन खिलाड़ियों को आते हुए। तो इस टूर्नामेंट में आप अपनी टीम की पोजीशन को और जो नई नस्ल आ रही है, जो नया टैलेंट आ रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने पेशावर के प्लेयर्स के बारे में कहा, तो पेशावर के प्लेयर तो माशाल्लाह एक तो फिट बहुत ज़्यादा है, अपने फिटनेस पे, अपने स्किल वर्क पे बहुत काम करते हैं। अभी अगर आप देखते हैं तो हमारे जो टॉप का प्लेयर है सीज़न का, तो साहबजादा फरहान है। इसी तरह बॉलर में भी इसी तरह हमारे बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं, और जितने भी यंग प्लेयर आ रहे हैं वो भी परफॉर्म होके आ रहे हैं। अभी अब्बास अफरीदी है, उससे पहले माँ सादाकत था, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है। तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए एक खुशामद है, क्योंकि हमारे जितने भी प्लेयर हैं KPK वाले हैं और सारे पाकिस्तान से जो यंग प्लेयर आ रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त। अभी आप पाकिस्तान कप जीत के आ रहे हैं, फिर आपने 50 भी बनाई है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। तो इसमें किस अंदाज से अपने इनफरादी तौर पर रोल को देख रहे हैं और बॉलिंग पे तवज्जो देते हुए हम आपको मजीद देखेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने वर्ल्ड कप में बॉलिंग किया अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह T20 में मेरे बॉलिंग हो रही है, तो बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। और इस मैच के हवाले से हमें कुछ इस तरह है कि अगर हम पहले बैटिंग करें तो उसको हम 40 रन से हमने पहले जीतना है। अगर हम बाद में बैटिंग करें तो हम 15 ओवर से पहले, तो उसी तरह प्लान करके उसी तरह हमने एज ए प्रोफेशनल उसी तरह खेलना है। ब्रिलियंट समझ, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सबसे अच्छी बात जो इस इंटरव्यू में लगी कि इफ्तिखार ने कहा कि उन्होंने अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट को प्रेफरेंस दी है ओवर T10 लीग। ऐसा ही आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने बड़े प्लेयर से? जी बिल्कुल, अगर आप पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं तो आपको प्रेफरेंस देनी होगी, ये लेवल ऑफ कमिटमेंट शो करना होगा। गारंटीज फिर भी नहीं लेनी चाहिए कि गारंटी होगी कि वो पाकिस्तान से खेलेंगे। आपको पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफरेंस देनी होगी। इफ्तिखार का ये जेस्चर ये साबित करता है कितने वो कमिटेड हैं। फिर उनका एक्सपीरियंस यहाँ नई जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ वो एक्सपीरियंस ट्रांसफ़र करें। तो हैट्स ऑफ टू हिम, और बड़ा अच्छा लगा उनकी ये कमिटमेंट देखकर। एब्सोल्युटली फैसल, अब बारी है टॉस की, तो देखते हैं दोनों कप्तान क्या डिसाइड करते हैं। चलते हैं सिकंदराबाद के पास। Welcome to the toss once again. Second game of the day here at the National Bank Stadium, Karachi. I've got the two captains. To my left, Zahid Mahmood from Larkana and Iftikhar Ahmed leading Peshawar, and the match referee, Mr. Ali Naqvi. Who has the coin? Iftikhar has the coin. Tail. Tails is the call. That's tails. And it is tails. Zahid, आप टॉस जीते, थोड़ा इधर आ जाए जी। क्या करेंगे सबसे पहले बताइए? हम फील्डिंग करेंगे पहले। फील्डिंग करेंगे। Yeah. उसकी कोई खास वजह है? चेज करने पे ज्यादा आप श्योर हैं कि चांसेस हैं जीतने के? मेरे ख्याल में कोई खास इतनी तो वजह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि मैं भी सेकंड इनिंग में कोई ड्यू वगैरह मैं भी आ जाए, तो उस वजह से बाकी विकेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कोशिश करेंगे कम से कम टोटल पे इनको स्टॉप करें। कितना टोटल आपको लगता है यहाँ पे जिससे आप कंफर्टेबल होंगे एज बैटिंग साइड चेज करने? आई थिंक 140 प्लस। 140 प्लस। उसके अलावा अपनी टीम का थोड़ा सा बताइए, स्ट्रक्चर कैसा है? 11 आज कोई चेंजेस हैं या वही टीम है जो लास्ट मैच? जी बिल्कुल, 3 चेंजेस हैं। एक सोबत लड़का वो नहीं खेल रहा, और एक इसरार लड़का है उसकी जगह, और दूसरा जो है मोहम्मद उमर था लड़का, वो नहीं खेल रहा है, उसकी जगह दानिश लड़का है। तो ये है, बाकी थोड़े नए लड़के हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, उम्मीद है मुझे। चलिए, गुड लक। थैंक यू।
इफ्तिखार, आपका भी यही फैसला होता अगर टॉस जीतते? देखो, मेरे ख्याल में टॉस हारना या जीतना मैटर नहीं करती। आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, हर किस्म की सिचुएशन हो आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, ताकि हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें। मगर अपने यदि प्रोफेशनल क्रिकेटर है, यदि प्रोफेशनल करेंगे। ओवरऑल पेशावर अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं टूर्नामेंट में। अब यहाँ क्योंकि बैटिंग आ गई है, कितना टोटल लगता है कि थोड़ा मजेदार होगा डिफेंड करने के? मेरे ख्याल में इस विकेट पे 170 180 बनाना चाहिए। आपकी टीम में क्या तब्दीलियां हैं, अगर हैं कोई? सेम टीम है। सेम टीम है, चलिए गुड लक। थैंक यू। ओके जी, तो लाड़काना ने मैच में टॉस जीता है और उन्होंने फैसला किया है कि वो पहले बॉलिंग करेंगे। खबर यही है कि लाड़काना ने टॉस जीता है और कोई ज़्यादा हमें सरप्राइज नहीं हुआ कि उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। शाफे से बहुत ही तगड़ी साइड है, 3 चेंजेस की गई हैं लाड़काना की जानिब, लेकिन पेशावर जो है वो चेंजलेस रही है, कोई चेंज नहीं किए। इसका मतलब यही है कि पेशावर अपने कॉम्बिनेशन से खुश हैं। लाड़काना से हम एक्सपेक्ट करते हैं नई टीम है तो ज़्यादा मौके देंगे यंगस्टर्स को, और वो ट्राई कर रहे हैं अपना बेस्ट 11 अभी तक, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ऑन पेपर तो आप देखें तो पेशावर और लाड़काना में पेशावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन आपको पता है T20 गेम है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कल हमने देखा AJK ने ऑलमोस्ट अपसेट शिकस्त दी इस्लामाबाद को, तो अच्छे गेम होने की तवक्को है। रिजल्ट से ज्यादा ये देखना होगा कि लाड़काना किस तरह की फाइट करती है पेशावर की स्टार्टेड टीम के साथ, और यही इस मैच की सबसे खास बात है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच फैसल। अब चलते हैं सिकंदर बख्त और सलमान भट्ट के पास कमेंट्री में। Thank you, Alimia. And here we are from the comm box, ready and steady with another game. That's the second for the day. Peshawar versus Larkana. As you just saw the toss, which was a little while ago, Peshawar has been asked to bat first. Mohammad Haris opening for Peshawar. The right-handed bat, 58 games for him. 6 50s and a good strike rate, 147. Saibzada is his partner, and both of them need to get their team off to a flyer because they need to win with some margin in order to get to a decent run rate. Remember, Lahore winning today with a margin and getting closer to that Karachi net run rate, and now Peshawar need to do something of similar sort. Asif will be the man with the new ball. Asif Ali Jr. He has played just 2 games. Probably this tournament he has made his debut, and we're about to kick off. What happens if there are 3 players with the same name? So there's Asif Ali, there's Asif Ali Jr. And then where do we go with that? This is after Ali, Asif Ali after Junior. I've seen there's a name like Asif Ali, there's Asif Ali Senior and Asif Ali Jr. You got a Ramiz Raja Jr. There are more of them. There is Mohammad Wasim Jr. Ijaz Ahmed Jr. Hey, you can always relate them with the regions, because Asif Ali from Larkana, Asif Ali from Faisalabad. Sikandar Bakht Jr. Has to be. This distinction is more important than any other one. Yeah, be wide. At the toss, Iftikhar Ahmed was of the opinion that the toss doesn't matter, which is a way of looking at it. Steve Waugh used to say that. So you take the conditions completely out of the equation to your advantage. And you probably need a man of his experience to say such a thing. And I think we had one. There'll be another wide. But I'm surprised that Zahid Mahmood felt the reason to chase his due. We haven't had any due, and he's been around this region, which is Karachi, for a long time. This time of the year, we hardly get any due. We just saw, well, you could say hints of it yesterday, otherwise nothing. And it's been very breezy, windy today. It's more of a trendy decision rather than relating to the pitch or condition, or also the opposition, which has to be taken into account. That's again, umpire had the choice to call anything, no ball or wide,
But no ball happens first, so he's given it a no ball and a free hit. So when you mentioned that Peshawar needs to win big, now they're not chasing. So they need to get a very good score going, and probably 180, 170, which Iftikhar was saying, and then try to bowl them out as quick as possible. Well, they can get a big score, no doubt about it. They have the ability, they have the players, explosive ones. Haris, Iftikhar himself, Sahibzada in form in the season. And this one has been given a wide. Well, that we'll have to see again. Meanwhile, there's an overthrow and will be an easy second for the batters. So it will be 3 because it has been given a wide, and also the free hit lives for another ball. Umpire Ali Heather signaling it wide. Oh, I think he went through on with the shot a little early. The ball arrived much later, missing out on that free hit. Yes, this was a short one, but he rolled his fingers over, so it was a slower one and deceived Mohammad Haris, who could not check what the bowler did. So full marks to Asif Ali Jr. for changing pace and being able to disguise it successfully. An experienced batter like Haris didn't know what was coming. Another wide. He's struggling with controlling this new ball. He might have to hold it cross seam now because he's just all over the place. Captain is just staring. He can't do much. If I was to ask you for a pick of your choice as a wicket-keeper batter, some names in the circuit: Hasibullah, left-handed keeper batsman; Haris, Ruhail Nazir, Azam Khan. I don't know if I should add Akhlaq. Well, that would depend what my team already is and where I can fit in one of those. Because if you want to get a player in who is able to make a good impact in the power plays, you might go for Mohammad Haris. But if you need somebody down the order to hit big, Mohammad Azam will be the man. And if you need a batter who can bat through and score big runs and is technically well prepared, then that would be Hasib. So 3 different choices, but it depends where I need them and at what role I would need them. Who has a better chance of making it to the Pakistan team for a consistent period? Well, I'm talking about T20s. Okay, let's say T20s, and let's say the next assignment is the West Indies and US, and the pitches are slow and low, and Azam Khan has done wonderfully well over there in the Caribbean League, and he has the experience of playing there, scored runs and been part of a winning side. So why not use that experience and have him keep also, because that is the best place for him to be in the field. From your answer, I noticed that you're giving more weight to their batting skills rather than their keeper skills. Who's the keeper? Well, if you're talking about T20 and impact players, then you have to weigh the batting skills, because keepers, all 3 of them are decent keepers. And with the gloves, they're not messy. They don't miss many chances. They're neat. So that is not the worrying part. The worrying part is the outcome with the bat, because to me, in my mind, I'm assured with their keeping skills. So what will be my priority is who can be more beneficial and create an impact with the bat in the team. Yeah, I agree on that. Modern day cricket, you are a wicket keeper. You have to be a top order batter. You can't be a tail ender. You won't be able to fit in the 11, at least for a long time. So that skill, along with the glove work, is very important. You see, we've talked about this earlier. Top batters, top wicket keepers around the world are batting up the order. That's going down the leg side. Never, ever a chance. We'll wait for the umpire's signal, but they've come back for 2. 2 leg byes.
also talking about keepers, you see at number 6 or maybe 7, how many players we have who can stand and deliver the big strokes? How many people we have who can play with power when the fielders are right on the boundary? So then you do not find many names coming across your mind. And certainly Azam does come across your mind because he has the power. He just has to be more alert to the occasion, because I think that he hasn't performed to his ability. And meanwhile, we see a glorious stroke off the back foot. Saibzada Farhan and his speciality. Anything short and wide, he is severe on that. It's been a long over, 14 of it, and it's 14 for no loss. Imtiaz Laghari, the new bowler. He'll be bowling from the University Road end. Third game for him. Early days. Right arm over. Flashes at that. Slight fumble allows a single. Short and wide again. But some good things over here are, if you see young fast bowlers coming from these regional teams, they have good structures, good solid tall boys, wider frames, and they have the look of that aggressive fast bowlers. So this is something very good to see, very encouraging. Lately, there are not many players who are structurally tall and look like fast bowlers. And this boy, Imtiaz Laghari, certainly has the appearance of an aggressive fast bowler. The rest we are yet to see. There's one more name, Mushtaq Ahmed Koloro. He's, let me take you back to the second edition of PSL. He was selected by Karachi Kings. He's there in the 11. Came through the talent hunt. Haven't seen much of him after that. One thing is for sure, Sikandar, when the lights take their effect, the ball comes on really nicely to the bat. If you look at the pitch, the appearance tells something different. But the way the batters are able to time the ball, it tells you that the pitch definitely improves down the line as the day goes on, and especially under the lights. So it's good for the batters. Peshawar need to score big and then also keep a difference when they win this game. This one did not bounce to his liking, wanted to pull that through mid-wicket, but was beaten. Dot ball. Nice wrist work, great timing. Saibzada Farhan will earn a boundary. Yeah, he'll earn a boundary for sure. He's been in sublime form, Saibzada Farhan. Saibzada has been in special form this season. Come 4-day games, he scored big runs. 1-day games, he scored where it really mattered, and now it's the T20. And this one again, short and wide. This time not in the gap, but it was nicely timed.
He's one of those batters, Sikandar, that short ball, he really plays well. And through the line also, he's got good arms extension, which helps him time the ball. At times, yes, the feet movement isn't as much as you would like, but otherwise, I think good hand-eye coordination and really good on the short ball. Wow. Standing tall of the back foot. Punches it through covers for a boundary to end the over. 23 for no loss. So once again, we see Sahibzada beautifully struck off the back foot once more. So pleasing on the eye, Sahibzada, when he's playing off the back foot, rocking on the back foot and punching it through the gap all along the carpet. He looks a special player, especially playing off the back foot. And for a change, when we have said something good about the player, he has responded in the same way. Here he is, Mushtaq Ahmed Koloro. Comes in straight away in over number 3. And hit for a boundary. Just to the right of mid-on. Slightly over pace, went through with the drive. Never mind, never mind. Yeah, that looked more of a loosener in the slot, and Mohammad Haris will pounce on anything like that. This one, again, in the replay, right in the slot. Good seam position, but did not swing at all, and Haris took full advantage, presenting the full face of the bat. It's been a while, Saman. Haven't seen that clean run flow from Haris's bat. Well, again, take you back. Last I saw good stuff from him was when he was playing for Zalmi last season. After that, he's been around in the circuit, as I mentioned earlier, with the Shaheens, the Asia Cup, everywhere. Sikandar, if we can have the replays of the last 2 balls that he's played, you'll get your answer. What happened in the first ball and what he played in the second ball, and we'll find our answer. Yes, please. 2 deliveries back to back. Yes. Yes, this over. After this ball. That's wrong, Rob. This was the third. You got to tell me what am I looking at when I see those first 2 deliveries. Yes, back to back. So, looking at Mohammad Haris, talking about him, what I want to see. We'll come back to Mohammad Haris. Once again off the back foot, but this time around straight to the bowler Mushtaq, who does well, stops it and makes it a dot ball through his good fielding. So coming back to Mohammad Haris, let's go and visit those 2 balls that he played in this over, and we'll get our answer what the problem is. See, the first ball, he just times it, and this time he wants to hit it really hard as he can. So here he loses his shape, and when he just maintains his shape and just caresses the ball, he gets a different result. So you have to try and time the ball. This one again pulled, and poor fielding that. That was a straightforward fielding and messed up by the fielder on deep square leg. And this will hurt Larkana. This is not something that they require. And the young boy, he just missed a straightforward fielding. Peshawar go to 32, and we are still in the 3rd over. Once again, we see in the replay, it was pulled by Sahibzada Farhan and a straightforward chance, and then
that position, long barrier, has long gone in history. So I think if we can see that more clearly, maybe he got a bad bounce or something. But for now, 3 overs gone, 32 for no loss, Peshawar. He's looked good in his first over. Gave away 9, yes, but some flashes of brilliance. He's not maintaining body shape while executing strokes. Mohammad Haris can do much better. He's got bundles of talent up his sleeve. It's just that maybe he's in a bit of hurry in his mind and he just wants to get on with the game. But sometimes some rotation of the strike, a couple of nicely timed strokes can do you a world of good as a batter. So he needs to realize that. He skied it. That should be taken. That has to be taken, yes. The frustration ends for Haris trying to play a big shot on a ball which he couldn't control. And Imtiaz gets paid with a gift of a wicket. Yes, ready. Front foot check over here, and it looks pretty much all right. Yes, the heel is behind the line, and Haris will have to go. Well, he started to leave even before the catch was taken because he knew, once again, trying to go very hard with his arms not extended. And it's hard to execute a pull stroke if your arms are not extended. So Haris, execution makes him suffer once more. And he goes for 7 of 10, very unlike him. And Umar the catcher, Imtiaz the bowler, 32 for 1 Peshawar. Amir Azmat, the new batter at number 3. 129 strike rate, 20 matches. 100 and, well, no 100 actually, 150. Amir Azmat is another young player who promises a lot, but his stats can obviously get a lot better. And this is another chance for him. It's a good run. Soft hands and quick call. You see that wicket again. He seems like he's made up his mind he's going to hit him over his head. Could have gone for a ramp shot when he's basically just gone on to play a shot in front or over the bowler where the ball's length is not allowing him to do so. Yes, Sikandar, if we can have a look once more from the side angle, which we just saw, very impressive Imtiaz. He bowled this ball, a heavy ball, from a length. It was not actually a bouncer. From just back of a length, the ball just came on quicker to Mohammad Haris. And that is where he was deceived, and he did not get a chance to extend his arms. Once again, this height definitely matters. He has a good simple action, good height, and he is getting that extra bounce, which not many bowlers have got. So here is a side angle. Look at the whip at the last moment of the wrist, and this is something special. So here is a talent who can be worked upon definitely. Imtiaz, with his height
and with his broad shoulders, he can be someone who can improve lots of things and be very useful. It's not easy. A player like Haris, he has been pulling Rabada in the World Cups here and there, and Imtiaz to come and take his wicket like this. And another bouncer, and this time Sahibzada Farhan mistimes it. No damage done, just a dot ball. He seems very comfortable playing that off the back foot. Sahibzada Farhan has mastered the art of punching it through covers. Boundary to end the over with 37 for 1. Another boundary here for Peshawar. And Sahibzada Farhan and back foot shots. That's a love affair. It's been so good all throughout the season. Anything short and wide, and Sahibzada can thread it easily through the gap. Doesn't matter how many fielders you have there on the offside. 4 overs gone, 37 for 1 Peshawar. Well, they've lost Haris. Still got 2 overs in the power play. Sahibzada will like to cash it out. And oh wow. Well, the rest of us are working. These two, this couple is roaming around. These two need to do at least 5 kilometers before they get their hands on any cup. Sikandar, they both said that we are on a diet. I think they're thinking it's a World Cup. I'll go for 4. I wouldn't say it's an edge. I think he's just gently opened the face and he's earned himself a boundary. There you see, guided to third man. तो हम जानते हैं कि पेशावर एक मिशन पे है यहाँ पे, और वो मिशन है कि कम से कम 40 रन के फर्क से शिकस्त दें ताकि वो भी अपने उस नेट रन रेट के फर्क को, जिसको लाहौर वाइट्स ने आज की शाम बड़ी खूबसूरती के साथ, जिसको कहा डॉक्टर ने उस ऑर्डर के साथ वैसे ही पूरा कर दिया। पेशावर के पास ये फायर पावर भी है और उसके साथ साथ अभी भी इनके पास एक डिसेंट स्टार्ट कहा जाएगा। 10 रन पर ओवर के औसत के साथ शुरुआत की है, गो के इनके एक्शन मैन आउट हो चुके हैं, लेकिन टैलेंट मौजूद है। आमिर असमत आए, खतरनाक अंदाज से अपने जिस्म से दूर रहकर खेलने के लिए गए थे। शानदार बॉलिंग इस तरफ से भी, इब्तिदाई रन कंसीड करने के बावजूद इस ओवर की इब्तिदा में भी चौका कंसीड किया है, लेकिन देखिए कि आमिर असमत को टीज किया ऑफ स्टंप के बाहर, पीछे पड़े थे लेकिन बहुत दूर निकली और स्विंग हासिल हुआ मुश्ताक को। आउट स्विंग हुआ ये बॉल, थोड़ा सा पड़ने के बाद बाहर गया, विथ थी लेकिन मिस्ड आउट, शायद स्विंग की वजह से। अच्छी बॉलिंग और इस बार ये बॉल सीधा रहा, पे लगा उनके लेकिन काफी ऊंचा। अच्छा स्टार्ट पेशावर के लिए, 40 रन पे एक खिलाड़ी आउट है, लेकिन ये जरूर कहना पड़ेगा कि ना तजुर्बेकार सही लेकिन अच्छे टैलेंट का मुजाहरा किया है अब तक लाड़काना के फास्ट बॉलर्स ने। कोयटा के खिलाफ 50 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली थी विनिंग कॉज के लिए नौजवान आमिर असमत ने। यहाँ पे बांध के रखा है, प्रेशर में लग रहे हैं और दूसरी तरफ से फौरन आए अली इस गेंद को रोकने के लिए, रन बनाने का मौका नहीं दिया और अचानक से एक विकेट क्या फर्क डालती है ये आपके सामने मौजूद है। लड़काना की टीम जो कि यहाँ पे खेलने के लिए उतरी है जाहिद की क़यादत में, अच्छी तादाद में उनको सपोर्ट भी हासिल है क्राउड की, गो के एक बड़ा फासला है जहाँ से
कराची से लेके लड़काना तक कोई 5-6 घंटे की दूरी, लेकिन लग रहा है कि जो कराची में मुकीम है और कुछ लड़काना से टीम्स के साथ ट्रैवल करके पहुंचे हैं सपोर्ट करने। और शानदार बाउंसर, वेल डायरेक्टेड, जिसने टीज किया बैट्समैन को। खुश नजर नहीं आते मुश्ताक इस गेंद को वाइड करार देने से। हम दूसरे एंगल से देख के जरूर इस पे जजमेंट देंगे, लेकिन बैट्समैन को बैकफुट पे जरूर धकेला। काफ़ी क्लोज अफेयर था, बिल्कुल ना खुश थे, लेकिन ये इस एंगल से अगर आप देखें तो वाज़े तौर पे उनके सर के ऊपर से आमिर अजमत PSL मुल्तान सुल्तान से खेल चुके हैं। 1.50 उनकी अब तक T20 फॉर्मेट में। तेज सिंगल हासिल करने के लिए लपक के भागे और स्ट्राइक रहेगा नौजवान आमिर अजमत ही के पास। चौके के बाद बेहतरीन कमबैक दूसरी जाने मुश्ताक का 43 पे। खेलते ही उन्होंने जो है कॉल की, 1 रन की, और बआसानी इब्तिदा में ही अगर कॉल कर दी जाए और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो दोनों प्लेयर्स की तो आराम से रन बन जाता है। पेशावर के तो फैन सारी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन कराची में आज लड़काना के बड़ी तादाद में सपोर्टर्स लग रहे हैं। जब टीम्स प्रैक्टिस कर रही थी तो उनके खिलाड़ियों को ललकार ललकार कर उन्होंने वेलकम कहा। और उसके साथ साथ आप चाहे कराची में खेलें, शारजा, मेलबर्न या फिर टोरंटो में, पेशावर के फैंस आपको हर जाने मिलेंगे। और उसके साथ साथ इनकी टीम में टैलेंट भी वो मौजूद है अहमद, जो कि एक के बाद एक करके आता जा रहा है। आप चूंकि बड़े क्लोजली मॉनिटर करते हैं तमाम मुकाबलों को जो कि एज क्रिकेट के हैं, चाहे अंडर 19 हो, इवन सो मच हो के अंडर 13। और इसके अलावा मुकाबले इसमें हर ट्रॉफी को पिछले 2 सालों के दौरान यहाँ इस खत्ते से आने वाले खिलाड़ी जीतने में कामयाब रहे हैं। और फिर जो ग्रेजुएशन हासिल करके आगे तक पहुँचे हैं, जिसमें रिजवान, इफ्तिखार और शाहीन शाह अफरीदी वगैरह, ये भी आपको बताते हैं कि बड़ा टैलेंट मौजूद है। अली आगे गेंद करने के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर, रूम बनाकर खेलने के लिए गए हैं, लेकिन गैप में निकालने में कामयाब। पिछले ओवर में बैकफुट पे चले गए थे, लेकिन दूर से रहकर भी खेले, लेकिन ऑल अलोंग द कारपेट। बेहतरीन चौका आमिर का। एक अच्छा शॉट की, ये देखिएगा ना, जगह बनाई है खेलने के लिए, लेकिन नजरें देखें, हेड स्टिल है और नजरें बॉल के ऊपर ही हैं। बहुत अच्छा शॉट, गैप में खेला, 4 रन। फिर रूम बनाकर खेलने के लिए गए, गेंद हवा में बल्लक हो गई है, फील्डर नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिस टच कर बैठे। पीछे की जाने भागना था, आसान नहीं था उमर के लिए, लेकिन ये टर्निंग मोमेंट हो सकता था इस गेम में। इब्तिदा में उनको शायद लगा कि गेंद हवा में घूमती रही है और उसके नीचे वो भी ट्रैवल करते रहे, बहुत देर तक हवा में रही थी, सेटल कर सकते थे, लेकिन इस मौके पर शायद प्रेशर में आए। जी हाँ, थोड़ा खतरनाक एंड में जरूर हुआ, लेकिन आइडिया बिल्कुल ठीक था। सीधा उन्होंने खेलने की कोशिश की, ये देखते हुए कि मिड ऑफ का फील्डर जो है अंदर है, वहीं प्लेस करने की कोशिश की, टाइम ना कर सके, लेकिन सेफ। यस, लड़काना की टेल अब गो के चौका कंसीड किया है इस ओवर में भी। इस टूर्नामेंट में अब तक वो उस अंदाज के इम्पैक्ट नहीं डाल पाए जो कि आप एक्सपेक्ट करेंगे इस लेवल पे, लेकिन इस सीजन को खेलकर उन्होंने मोमेंट जरूर चुराए। फिर रूम बनाकर खेलने के लिए गए और फिर ओवर द टॉप निकालने में कामयाब। इस मरतबा फरहान है जिन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया, दूसरे एंड से सारा तमाशा देख रहे थे, एनफोर्स किया शॉट को, जगह बना के रिस्क लिया, लेकिन पूरा रिवॉर्ड हासिल किया। इस चौके के साथ पेशावर के 50 रन मुकम्मल, 1 विकेट के नुकसान पर। और दोनों बैट्समैन, ये देखिए, इन्होंने भी जगह बनाई, इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन हासिल किए। पावर प्ले का आखिरी ओवर, और इस बार शॉर्ट बॉल, और वहीं फेंक दी जहां इसको जाना चाहिए था। इस लेंथ पे बॉल नहीं कर सकते आप एक सेट बैट्समैन को, और खास तौर पे साहबजादा फरहान जैसे बैट्समैन जो कि जारहाना अंदाज के लिए जाने जाते हैं अपने। ख्वाब सा ओवर, और दूसरी तरफ एक ड्रीम रन है साहबजादा फरहान का, जिसको अब वो T20 में भी रन्स में बदल रहे हैं। ऑफ द बैक फुट पूरा तोहफा मिल गया था, पावर प्ले का ओवर था और उसका पूरा फायदा उठाया। ये कराची है, मेलबर्न, हर जगह बड़ा छक्का होता है। आखिरी गेंद पावर प्ले की आने को, क्विक सिंगल है और इसी पे इक्तफा करेंगे। ऑलमोस्ट बेस्ट पॉसिबल पावर प्ले
पेशावर के लिए 59 पे। तो हम बात कर रहे थे जो टैलेंट आ रहा है, क्योंकि अब से एक सीजन पहले जब इन्होंने मुकाबले खेले तो हर एज क्रिकेट को अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 जीतने में कामयाब रहे। और विजित लोगों से बात होती है सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले, वो इंटेलिजेंट भी बहुत हैं इस क्रिकेट को फॉलो करते हुए। वो तमाम इवेंट्स को फॉलो करते हैं, ना सिर्फ कि अपने इस हुनर को दिखाते हैं बल्कि इसके साथ साथ इसमें वो कोचेज के ज़रिए से और अपने दीगर पार्टिसिपेशन के ज़रिए से भी अपने टैलेंट का सबूत देते हैं। और आई एम श्योर कि ये जो तमाम ब्रॉडकास्ट का एहतमाम है और जो लोकल खिलाड़ियों को इसके हवाले से मौका मिल रहा है, और भी आपको बड़ी तादाद में खिलाड़ियों के लाने का एक मौका फराहम कर सकता है। आज ये अंपायर ने कन्फर्म किया है, अंपायर आले हैदर के पावर प्ले का ओवर मुकम्मल हुए चाहते हैं और अब फील्ड वाइड स्प्रेड हो सकती है। इस मौके का फायदा उठा के जाहिद गेंद करने के लिए आ रहे हैं। 3 फील्डर बाउंड्री पर मौजूद हैं ऑन साइड पर। जाहिद भाई साहब 5वें बॉलर गेंद करने के लिए आएंगे। फरहान उनके सामने। तो कैसे देख रहे हैं इस टैलेंट को? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेल है ये। जाहिद सबसे तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं इनके, और देखना यह है कि इनको किस तरह हैंडल करता है पेशावर। अच्छी गेंद ऑफ द बैक फुट धकेला, एक ही रन पे इत्तेफाक करना पड़ेगा। नहीं, भागे दूसरे के लिए और पूरा फायदा उठा लिया। वहां पर मौजूद फील्डर को प्रेशर में डालते हुए अच्छे 2 रन इन दी एंड। टैलेंट की आपने बात की, पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा सूबे से सबसे अहम बात जो आज इफ्तिखार ने भी अपने उसमें कही थी, ये रीप्लेस बॉल का देखिए। बॉल आहिस्ता से लेग स्टंप पे खेली, फील्डर काफी डीप था और बहुत तेजी से 2 रन, अच्छी रनिंग। तो इफ्तिखार ने भी आज अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी कि सबसे अहम बात तो उनकी फिटनेस है, उसी से बहुत फर्क पड़ जाता है और बाकी जो सूबों के प्लेयर्स हैं उनको पीछे छोड़ने में उनको आसानी होती है अपनी फिटनेस की वजह से। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में मेरे ख्याल से लोकल क्रिकेट इस वक्त पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा हो रही है। जो एक ज़माने में कराची के लिए मशहूर हुआ करता था स्ट्रीट स्मार्ट, गेम अवेयरनेस ज़्यादा प्लेयर्स में होती थी क्योंकि लोकल क्रिकेट बहुत होती थी, वो अब चीज़ मेरा ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा में चली गई है। काफ़ी क्लब क्रिकेट और उनके छोटे लेवल पे क्रिकेट ऐसे होती है, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेलते हुए आते हैं ये लड़के नीचे से। यस, इंटरेस्टिंग। अच्छी फील्डिंग की इस मरतबा, कॉम्पेंसेट किया अकील ने पिछले लूज काम को। और जाने बाने अंपायर इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं आले हैदर, जो कि मौजूद है नॉन स्ट्राइक एंड पे, जबकि स्क्वायर लेग पर इस अहम मैच में अंपायरिंग के फैसले अंजाम दे रहे हैं सीजन्ड और सीनियर मोहम्मद आसिफ। और एक मरतबा फिर गलती कर बैठे, अपने दाएं जानिब गए थे अकील इस गेंद को रोकने के लिए, लेकिन दूसरी मरतबा एक ही ओवर में ये रन लीक कर गए। ये चौका नहीं होना चाहिए था। बॉलर्स को बैक करना पड़ेगा फील्डर्स को अगर इस तजुर्बेकार पेशावर की टीम को मुश्किल में डालना चाहते हैं अगर ये टीम। लेकिन ये देखिए नजर हटा ली उन्होंने बॉल के ऊपर से, और जैसे एक मरतबा फिर दूसरे रन के लिए लपक के आए हैं। ये पोजीशन ही ऐसी है, इस पे पहले अकील से मिसफील्ड हुई थी और इस मरतबा लिया असर से पिछली गेंद पर, और इसके साथ एक अच्छा ओवर मिल गया पेशावर को। 10 रन पर ओवर की औसत के साथ 70 पे 1 पेशावर। थोड़ा सा फील्डिंग को के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाना पड़ेगा अगर पेशावर को किसी मुश्किल में डालना चाहते हैं लाड़काना। और एक बार फिर ये शायकीन भरपूर लुत्फानंदोज होते हुए, पेशावर में काफ़ी सारे टेस्ट प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद। स्पेन दोनों एंड से एक्शन में है और पिछले ओवर में तेज रनिंग के जरिए से, जो कि दोनों के पैरों में बिजली भरी हुई है, जिस फिटनेस का हैमर आपने जिक्र किया उसको रन्स में उन्होंने प्रोड्यूस किया। गो के चौका भी नहीं होना चाहिए था जहां पे फील्डर थे अलियासर, अकील दानिश को भी रोक लेना चाहिए था जहां पर 1 रन को 2 में कन्वर्ट किया। अलियासर यहाँ हैं,
कंटिन्यू करने के लिए यूनिवर्सिटी रोड एंड से, और अब अपने टारगेट को नए तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पार्टनरशिप कीमती है जो कि अब तक पनप रही है। 40 रन की हो चली है। बड़े ट्रिकी टाइम पर आउट हो गए थे हारिस, जो कि एक मिशन पे लग रहे थे, लेकिन अब अचानक से एक मरतबा फिर 10 रन पर ओवर के औसत के साथ हो सकता है कि हमें नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में आज के इस टूर्नामेंट के अब तक के पहले 200 मिल जाएं यहाँ पे खेले जाने वाले मैचेस। उठाकर खेलने के लिए गए, एलिवेशन बेशुमार है और डिस्टेंस भी, गेंद लगा जाके कि स्टेडियम से बाहर कहीं पेशावर में लैंड कर जाएगी। आमिर का भरपूर छक्का। अच्छा शॉट इन द एंड, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर अगेंस्ट द स्पिन, और हाफ वॉली भी नहीं थी ये बॉल, लेकिन अच्छी तरह उसको टाइम किया और नीचे आ गए थे बॉल के। 6 रन हासिल किए। वंस अगेन लॉन्च किया है और नतीजा वही, सेम एरिया, यस, बैक टू बैक छक्के। आमिर ऑन फायर इन कराची। और रिप्ले, तकरीबन रिप्ले था उस शॉट का। मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ी सी और लेग स्टंप पे ये बॉल गिरी हुई थी, लेकिन उसी पोजीशन में आके उसी तरह का शॉट, और रिजल्ट भी वही। खूबसूरत वाइल्ड स्विंग था बैट का, और इसके जरिए से अब 200 ऑन कार्ड्स लग रहा है। आज ही के दिन नेक्स्ट डोर जो हाई परफॉर्मेंस क्रिकेट ग्राउंड मौजूद है, वहां पर रावलपिंडी ने बहावलपुर के खिलाफ ये कोई हमालिया खड़ा किया था 232 रन का। वो अबूर कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन 200 डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स हैं। एक मरतबा फिर उड़ाकर खेलने के लिए गए हैं, आउट होने का खदशा है। फील्डर अपने बाएं जानिब जाकर इसको कैच करने के लिए जाएंगे और 3 के दरमियान में लैंड कर गई। जाहिद जो कि अपने लिए सब कुछ ठीक कर चुके थे, गेंद के नीचे पहुंचे, हाथ को भी ऑलमोस्ट बंद कर लिया था, लेकिन शायद बैलेंस गवा दिया, और ऑल इंपॉर्टेंट लाइफ हासिल हुई है पेशावर और आमिर को। यही खतरा था, पिछले जो 2 शॉट थे उनमें भी यही था, अगेंस्ट द स्पिन खेलने की कोशिश कर रहे, और इस बार भी ये देखिए थोड़ा सा बॉल स्लो आया और शायद थोड़ा सा स्पिन भी हुआ और टॉप एज लगा, लेकिन इसका फायदा नहीं उठा सकी लाड़काना की टीम। 8 ओवर के इख्तिताम पे 85 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। और ये देखिए कैच, और नीचे आ गए थे बॉल के जाहिद, उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो ये कैच बआसानी पकड़ लेते, लेकिन उनके हाथ पे लग के बॉल नीचे गिर गई। एक चांस मिल गया बैट्समैन को। Power play was really good for Peshawar. Strokes all around the ground. Sabzada Farhan continuing his good form across formats. Back live now. Call is for 2. Larkana have been run ragged by Peshawar because they've really put them under pressure. One of the better power plays of this tournament. Sabzada Farhan and Amir Azmat. Initially it was Haris. There you go. Zahid looking to put brakes on. This is in the air. And oh, what an effort. What an effort. Come on, Ali. Come on, yaar. Oh, that's, I don't know, it's a good effort, but I think this should have been taken, Faisal. Fielding standard has been below par by Larkana. Another lapse, another catch going down. We saw a couple of boundaries, easy boundaries given, and now this catch. You're not going to challenge the big sides if you keep on fielding like this. This was simple, this was straightforward. He had to keep an eye on that rope. Remember, they hardly ever play night cricket in the lights. He's terribly close to that rope. He's still inside the rope. Probably
This is what umpire wants to have a look now. The foot is in the air. The hand is touching the skirting. Really a tight one for the umpire. He did well after dropping it. There. Yeah, he did well right there. But there is no excuse of dropping the chance. That's poor. But he ended up saving a boundary. Good call, Ali. Good call. Yeah, the catch. Live, it looked like he was closer than what eventually he was, so he probably misjudged it. But then he had the wits about himself to save the boundary. Did he? Did he? Oh, yeah, he did. That foot was terribly close. But, yeah. Faisal, as a captain, how do you react to it? Do you reprimand him for dropping a catch or saving a boundary? That's terrible. How do you react to me as a commentator? I called it good effort. I saw probably the second part live, and the first part was not so good, so I don't know. It happens. You have a lot of tea down and up, so maybe that's effect still on your head. Well, that's okay. It happens to best of us. 88 for 1. Yeah. Well ball, well ball, well ball, well ball. Googly, another slip and trip for the Larkana fielder. They're really struggling. Probably none of them have played in, other than Zahid, of course, in such iconic arenas, under a big stage. That shot, long hop, asking for trouble, and it's been deposited into the stands by Amir Azmat. This length is never going to work on any better. Half trek up, and the type of form Amir Azmat is in is not going to miss out. This was asking to be hit. Easy pickings. Clarity in mind all the way. Wonderful batting. Superb batting. This is not a good news for Larkana because Amir Azmat is just on fire. Still waiting for the ball to be retrieved. Zahid Mahmood on his knees. So is Larkana. Really struggled in the field, Larkana. The occasion has got to them, Ali. Yeah, I can understand about the catching, but ground fielding, there is no excuse to it because there is nothing wrong with the ground. It's a great outfield. You just don't have any excuse for lapses like this. Look at that. That is poor. This is just one. I'm telling you, there is another one similar to this. This one. Not having an eye on the ball. This one again. Third. What do you do as a captain? Yeah, well, the captain himself getting in on the act. And that's another one. The way they're slipping, I don't know what kind of spikes they're wearing because you really have to have good quality spikes on this arena. That is a good delivery, Zahid. Once again, though, the fielder coming from the deep. This time the batters decide not to go for the second. We might have some addition to that package. This time it was the wicketkeeper. Pressure clearly showing on the fielders of Larkana. I can give them the margin, but for how long can they continue fielding like that? It's because Peshawar is such a quality side. If you give them chances, they're just gonna bash. Oh, again, almost a collision. Almost. Back up. End of the over. 97 for 1. For 1 in the entire tournament. We haven't seen much of dew, and the way the Larkana fielders are slipping, these look like spikes to me, but probably not the ones that are required at this level. Yeah, these are fast bowlers, both of them, so they got to be wearing the spikes and full spikes. But yes, the pressure is different.
Amir Azmat on the back of a 50 in the previous game, his first career 50. Once again, they're calling for two. Really ruthless running there by Peshawar, putting Larkana under immense pressure and doing it very, very comfortably. Yeah, they're very experienced and they know it that Larkana is under pressure and they're using it for their best. They're running hard, especially the first one. They run hard and get the second one quite easily and make the fielders make a mistake. That's good cricket, sensible cricket. Two straight, nice tickle from Amir Azmat will earn him a boundary. Wrong line and the 100 has been brought up inside the first 10 overs. Just not working for Larkana. If they're fielding well, they're bowling poorly. Somebody got to tell them it's a combination of both if you want to challenge a bigger side like Peshawar. 100 comes up. Lots of more runs to come, I can sense it, Faisal. Definitely, with only one wicket down. Some big hitters to come for Peshawar. Larkana really under the pump here. This big stage. Once again, the call is for two. The field is set deep. Huge pockets here at National Bank Stadium, but this time the ground coverage was better. Partnership of 72 of just 37 deliveries. See, here's another example. They're running between the wicket. They run the first run so hard that they almost create that second run for themselves. Put the pressure on the fielders. That's quality from Peshawar. Oh, Shahzada Farhan will be disappointed. There was room on offer. He was looking for that gap. Couldn't beat that short third. What they do with this hard running, that the sweepers now on the onside are coming off the boundary by about 10 yards as we watch this one. There was a boundary on the offing if it found the gap. Yeah, Larkana has produced a master bowler, Shanwaz Dhani. Is not here included in this side. Plays for Karachi now. Lots of fans, and I tell you, a couple of players. Iftikhar tops the list, and Haris has got lots of fan following. And we could clearly hear it, the sound when Iftikhar will come, we'll hear it. Well, looking at the fielding of Larkana, Rob has reminded me that they may be from the Ali school of thought of fielding. That's not me, Ali. That's on Rob. 106 for 1 at the halfway stage. Just one wicket for Imtiaz. And remaining have struggled. Look at the economy. Asif, 12. Ali, 15.50. Zahid, the captain, the ace bowler, 2 overs, 23. 11 the economy. That's why they're struggling. Oh, how close was that? How close was that to that off stump? Amir Azmat was aiming for that mid-wicket boundary. Just had a swing at thin air. He's lucky to be there. Yeah, Amir has given they've given the license to Amir. I think that he has to go big. And look at the approach, the swing. It just straightened ball. Had it spun, we might have seen another 6. Well ball, well ball. It was googly. Amir Azmat was looking to open up that offside for him. Nice comeback, Shahbaz Ahmed bhai. 5 fielders on the offside, so not much of a reward on that risk for Amir. But Zahid is really following him well. This is excellent bowling. You saw those bowling figures, and you may think that it's only the bowling that's been bad, but I think bad fielding has contributed to those figures. Absolutely. Look at that. They're just loving it. And they've been treated with some quality hitting by Peshawar side. That's why they're here. Excellent. Oi, 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 oi. Oh, well done, well done. Well ball, well ball, well ball.
Amir Azmat has been promoted up the order. They've got plenty of batting. There's Adil Amin, Nabi Gul, Iftikhar himself. Abbas Afridi can bat. That's not a good news for Larkana. They've got plenty of big hitters. In the zone on that occasion, but fielder is getting underneath it and takes it for once. Zahid has got a wicket. Amir Azmat couldn't get to that 50. Mushtaq was the catcher and he really looked comfortable underneath that high ball, and Zahid gets the breakthrough. Yeah, finally something good for Larkana. They've caught one. Wow. It's been that sort of a evening for them in the field. But more importantly, getting this wicket of Amir Azmat, who looked really threatening. You would be hoping there's nothing wrong there. Yes, definitely nothing wrong there. It was in the air for a long, long time. That gave enough time to the fielder to come underneath it, adjust himself. Look at that, it just went miles in the air. He had plenty of time to adjust himself, watch the ball clearly and get the catch. A very good inning, 44 of 27, 108 for 2. Chants of Chachu, Chachu ringing around the National Bank Stadium because this man is on strike. Iftikhar, the crowd's favorite. Well, if he has a good time for the next half an hour or so, there will be some entertainment here. Thank you. Look at the strike rate, 127, 100, 29 50s, 4,400 runs. Brilliant, fantastic record. Up the mark immediately, and he will keep the strike. 11 gone, Peshawar 109 for 2. Good to see fans coming in. Today is Monday, but we have decent attendance in the stands that have been open for the spectators. Maybe not big in numbers, but they make a lot of noise. Create great atmosphere as well. Uh-oh. Ali, over to you. Fan moment, definitely. They're all there to get a selfie with you or a picture with you, Faisal. There are lots of fans of you. Maybe with you. Yeah, I know that. That's definitely. I agree on that. They were all your fans. I have to tell the truth on air, so. Faisal, I was fortunate enough to be commentating on the same game where Iftikhar Ahmed hit 6 sixes to Wahab Riaz, and it was such a treat to watch him play like that. Haven't seen a Pakistani player hit that cleanly in a long time, for a long time. The way he hit him, it was just brilliant to see, and the crowd just was fired up after when he batted. So he has that potential, he has that skill. He does, and he's not just done it on one occasion. He lit up the stadium. I remember him hitting 3 sixes in the World T20 in a huge game against India at the MCG, Theatre of Dreams, and that was some side as well. Iftikhar is a very, very clean hitter. Two is the call again. Running one hard, and that's all they're going to get. Good fielding this time. Nelson on the board. It's good time, Faisal, for him to come because there's plenty of overs left. He can take his time, take a few overs, and then unleash himself, because we know that he needs a few overs just to settle down. Couldn't pierce the gap. Another misfield. Another sloppy work. Well, the kind of platform is set, and knowing Iftikhar and with Sabzada Farhan well set in,
I mean, you'd see that he can unleash at any given time. Really nothing to lose, considering the opposition and the platform that he has. Sabzada Farhan, on the other hand, profits from another misfield and decides against going for the second. That would have brought him into his 50. Probably he'll have to wait. Larkana has really been caught like a rabbit in the searchlights. You know, they really struggled. The big stage has got to them. And it doesn't seem a contest at the moment. Something special has to happen here for them to come back into the game. That single will conclude a good over from Raza. Just the 5 of the over. 12 gone, 114 for 2. अगर इसी अंदाज से चलते रहा पेशावर तो वो चला जाएगा 190 तक, लेकिन इसके पास 8 विकेट्स के साथ अभी भी इस बात की क्लियर अहलियत है कि पहुंच सके वो 200 के बियॉन्ड। और कोई बात नहीं, अगर आज के दिन ये इफ्तिखार का बल्ला चल पड़ा तो वो अभी तक इस टूर्नामेंट का बेहतरीन टोटल भी हासिल कर ले, जो कि आज ही की शाम रावलपिंडी ने नेक्स्ट स्कोर बनाया बहावलपुर के खिलाफ 232 का। स्पिनर्स इन एक्शन है। इफ्तिखार ने अब तक अपने कदम जमाने शुरू किया, लेकिन दूसरी जाने में साहबजादा फरहान, ख्वाब सा सीजन जारी साहबजादा फरहान का, और अब T20 फॉर्मेट में भी अपने बैटिंग की एबिलिटी का भरपूर मुजाहरा पेश कर रहे हैं। दूसरे रन के लिए भी वापस आएंगे और इसी के साथ 50 रन मुकम्मल साहबजादा फरहान के, गिरते पड़ते बचते लेकिन रिमार्केबल टूर्नामेंट जारी पेशावर के कप्तान साहबजादा फरहान का, जहां से उन्होंने अपने मुख्तलिफ अदवार में टीम को लीड किया अपने कप्तान के साथ, इफ्तिखार के साथ इस टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस, पहले फर्स्ट क्लास सीजन में और उसको कन्वर्ट करने में कामयाब T20 फॉर्मेट में 8वीं 50 मुकम्मल किया। वेल डन साहबजादा। और रन हासिल होंगे ऑफ द बैकफुट, 4 रन। साहबजादा फरहान इस पूरा सीजन, चाहे काले आजम ट्रॉफी हो, चाहे वनडे हो, और अब ये T20 शानदार फॉर्म का सिलसिला जारी इनकी तरफ से, और बहुत ही प्रोलिफिक रन स्कोरर रहे हैं इस सीजन। और इस बार T20 में नायब कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और अपना सबसे पहला काम जो कि इनकी बैटिंग है उसमें बिल्कुल पेशावर का जो पर्पस है उसके अकॉर्डिंगली खेल रहे हैं। 34 बॉलों में 56 रन पर हैं। एक बार फिर स्ट्राइक रोटेशन भी बड़ी अच्छी, इफ्तिखार के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बड़ी पार्टनरशिप्स में ये दोनों खेलते रहे हैं, और आज पेशावर को एक बड़े मार्जिन से जीतना है, और ये पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी कि इन्हें कहाँ तक ले जाती है। 170-80 रन की बात की थी इनके कप्तान इफ्तिखार ने। सेट है आखिरी 7 ओवर के लिए, 1 2 3 for 2। हारिस जल्द आउट हुए, जो कि कुछ ज़्यादा करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी विकेट हासिल की इम्तियाज़ ने, और उसके बाद आमिर ने अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया। बुलंद बाला छक्के जो कि अगर आप कराची में शायद कोई 3-4 मील की दूरी पे भी हों तो आपको नजर आएंगे, उछलते कूदते ऊपर नीचे जाते नीचे आते, लेकिन उसके बाद से इफ्तिखार आए जिन्होंने अब तक एक एंड को ज़रा
इस्तेकामत दी है, जबकि दूसरी जानिब से साहबजादा फरहान है, बड़ी शानदार नॉक उन्होंने खेली है। अब तक 35 पे 56 बनाए, एक छक्का उन्होंने भी लगाए, 8 चौके लगा चुके हैं नौजवान। हालांकि इतनी सर्दी नहीं है लेकिन अपने आप को सेफ रख रहे हैं। लेट खेले और एक मरतबा फिर खराब फील्डिंग के जरिए से गेंद चौके के लिए रवाना। अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल बखूबी करते हुए इफ्तिखार यहाँ पर, और बिल्कुल जोर लगाने की जरूरत नहीं थी। बहुत शानदार तरीके से टाइम किया, बॉल को अपने तक आने दिया और फिर जो वेकेंट स्पेस थी पॉइंट और थर्ड के दरमियान वहां से खेल दिया। और इंटेलिजेंट बैटिंग है ये देखिए, स्लोअर वन था और उसकी पेस जनरेट की उसके ऊपर, बिल्कुल नजरों के नीचे इस बॉल को खेला और कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। और लगता है कि ये दोनों 170-80 से तो आगे ही ले जाएंगे स्कोर को। डाउन द लेग साइड ओवर कमिट कर गए तो एक्स्ट्रा का रन तो हासिल होगा। जो पिच का रवैया है वो उस अंदाज की ये पिच शायद अब तक चली है जो कि इब्तिदा में आपको मौका नहीं देती कि आप राइट फ्रॉम द गेट गो अपने बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जाएं। लेकिन साहबजादा फरहान की इनिंग्स शायद एक तरह के टेम्पलेट रहेगी उन तमाम के लिए जिन्होंने आकर यहीं पे मैचेस खेलने हैं, क्योंकि अब तक का फार्मूला तो ये है कि एक दिन के गैप के बाद पिचेस को रीयूज़ किया जाता है। अपना वक्त लें और उसके बाद ख़राब गेंद का भी इंतज़ार करें। अच्छा कम बैक, चौका कंसीड करने के बाद रजा का वाइड भी की लेकिन राइट इनटू द स्टंप्स गेंद करने के लिए आए। इफ्तिखार ने अब तक ये इस ओवर की इब्तिदा में पहला चौका लगाया, लेकिन ऑन साइड पे बड़े शॉट के मुंतजर होंगे। सीधा खेले और फील्डर के पास मौका आ जाएगा इसको हासिल करने का। सो फार सो गुड, नॉट टू बैड। इफ्तिखार जो है वो बहुत अच्छी टाइमिंग उनकी, कोई भी शॉट खेलते हैं तो लगता है ऐसे ही है कि जैसे कोई बड़े रन्स बनेंगे, लेकिन सीधा फील्डर की तरफ था ये स्ट्रोक। और बहुत स्टेबल पार्टनरशिप है, साहिबजादा फरहान पूरे कमांड और कंट्रोल को संभाले हुए, और इफ्तिखार किसी टाइम भी 1-2 ओवर्स ऐसे खेल देंगे जहां पर ये रन्स कहीं के कहीं जा सकते हैं। इस टाइम पे स्ट्राइक रोटेशन जारी है दोनों जानिब से, और शानदार 50 की फरहान ने आज, और बैकफुट पे बहुत ही स्पेशल स्ट्रोक्स खेले। और ये वो 50 रन और ये वो बैकफुट जिसका हमने जिक्र किया एक बार, बहुत खूबसूरत क्लिप, एक और बैकफुट पे खूबसूरत स्ट्रोक, और ये वो पुल स्ट्रोक, और बहुत ही कमांड, स्पिनर्स को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलते हुए, और ये पुल किया एक बड़े छक्के के लिए, और खूबसूरत 50 रन मुकम्मल किए। लॉन्च किया है, जोन में गेंद मिल गई और शायद अब तक का सबसे बड़ा बुलंदोबाला, बल्कि स्टेडियम की छत पे फेंक दिया है इफ्तिखार ने, और बादलों के से एफर्ट्स के साथ गेंद वहां से घूमती फिरती नीचे आएगी। जोन में गेंद हासिल हो गई, पूरा फायदा उठाया एक्शन मैन इफ्तिखार ने। और अभी हमने जिक्र किया था कि किसी वक्त पे इफ्तिखार जो हैं वो अपनी, कह लीजिए कि अपनी जोन में आएंगे और एक आध ओवर में बड़ा फर्क डालेंगे, और शायद ये उसी जो कड़ी का इब्तिदा है वो अब यहाँ पे कर दी गई है। और इस शॉट को बहुत ही बड़ा छक्का, पूरा लॉन्च किया, पूरा बॉल के नीचे घुसकर इसको बहुत दूर तक पहुंचा दिया। अच्छी खबर यह कि गेंद वापस आ चुकी है, लेकिन ओवर मुकम्मल करने के लिए गेंद बाकी है। महंगा ओवर बन गया अचानक से सिक्सर के साथ। फुल टॉस हासिल हो गई इफ्तिखार को, और लगता है कि उससे भी बड़ा गेंद जाती चली गई ऊपर की जानिब, सिमिलर एरिया डिफरेंट शॉट, नतीजा वही 6 रन। ये अपनी टीम को फायदा दे रहे हैं और अपनी मैनेजमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा बॉल घुमा दिया इन्होंने 2 बॉलों में, और बहुत ही शानदार स्ट्रोक, मजाक अपनी जगह, लेकिन इफ्तिखार के ये जो बड़े शॉट्स हैं ये इस टोटल को डेफिनेटली उस जोन में ले जाएंगे जो ये गैप रखना चाह रहे हैं। यानी कि 40 रन से अगर जीतते हैं तो ये लाहौर के करीब चले जाते हैं रन रेट के, और अगर 55 रन से जीतते हैं तो कराची के करीब चले जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पार्टनरशिप का फ्लरिश करना, और इफ्तिखार का ऐसी बड़ी बड़ी हिट्स लगाते रहना। यस, फ्री स्पिरिटेड क्रिकेट दोबारा खेलने के लिए इफ्तिखार आ गए हैं। लड़काना जैसी टीम जो कि लग रहा है कि कुछ इमोशंस भी इनके सामने है, कुछ फील्डिंग के लैप्सेस हैं, मौका इनके लिए बड़ा है, लेकिन ऐसे में शायद मैनेजमेंट का किरदार यूं भी ज़्यादा अहम हो जाता है कि इनके टैलेंट को उभारने के लिए, इनके नर्व्स को कंट्रोल करने के लिए
इस मौके पे जब इनका मैच टेलीवाइज हो रहा है। जाहिद इनके कप्तान है, लेकिन इसके अलावा आपको तमाम ऐसे क्रिकेटर्स मिलेंगे जो कि वहाँ पर बड़ी तादाद में उन्होंने मैचेस खेल रखे हैं, क्लब क्रिकेट के सिस्टम से उभर के सामने आए हैं, लेकिन यहाँ पर शायद इमोशंस में वो पीछे जा रहे हैं। और ये वो 2 गेंदें थी जो कि अच्छा ओवर करते करते उनके जोन में मिली 2 छक्कों के लिए। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि पहले उन्होंने एक अच्छे लेंथ बॉल को बड़ा हिट मारा और बॉलर को पुट ऑफ किया, उसको अपनी लाइन लेंथ से हटाया। अगला बॉल उन्होंने फिर यॉर्कर करने की कोशिश की और जब यॉर्कर मिस होता है तो फिर फुल टॉस बनती है और उसके सामने अगर इफ्तिखार सेट खड़े हों तो फिर कहानी मुख्तलिफ नहीं होती, वो भी फिर बड़ा छक्का ही होता है। तो बहुत ही शानदार बैटिंग दोनों बैटर्स की जानिब से। 14 ओवर्स के अख्ताम पर 142 रन तक वो पहुंचे। अब आसिफ जूनियर आए हैं और इनके लिए भी कड़ा इम्तिहान है 2 सेट बैटर्स के आगे इस वक्त बॉलिंग करना, जबकि वो अपनी पूरी फ्लो में है। एक मरतबा फिर 1 रन के लिए जा पाएंगे। आगा मैनेजर हैं कोच लाड़काना की टीम के आजम खान, जाने माने हेड कोच के फराइज अंजाम दे रहे हैं। बल्कि इस तरफ एक और इमोशंस का काम जो कि इनके आड़े आया। आसिफ जूनियर अपना दूसरा ओवर शुरू करने के लिए आए थे और इब्तिदा में ही नो बॉल कर दी। इफ्तिखार सामने हो, नो बॉल के बाद फ्री हिट की डिलीवरी फेंकने के लिए आएंगे तो करोड़ों का प्रेशर होगा ऑलरेडी आसिफ अली जूनियर पे। यस, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग कॉल। जबकि आसिफ अली जूनियर शायद अपने आप को हैवी हार्ट के साथ गेंद करने वाला तस्वर करें, लेकिन जो हो चुका वो हो चुका। गेंद करने के लिए आएंगे, फ्री हिट कमिंग अप और इसको निकालने के लिए गए चौके के लिए। इब्तिदा में लगा कि इसकी स्लोनेस से मुतासिर थे, लेकिन पेस को रीड किया और एक और चौके के लिए रवाना किया। देखिए ये 4 रन तो हो गए और इसको फ्री हिट भी कह दिया गया, लेकिन ये नो बॉल जो है ये खासा कह लीजिए कि बहुत ही अनलकी फील करेंगे बॉलर इस कॉल के ऊपर। बहरहाल इफ्तिखार ने इस बॉल का पूरा फायदा तो वो नहीं उठा सके, छक्का मारना चाहते थे, लेकिन 4 रन जरूर मिलेंगे पेशावर की टीम को। और यहाँ पर आसिफ अली जूनियर को टाइट लाइंस पे बॉलिंग करनी है। दोनों जो फील्डर्स हैं फाइन लेग और शॉर्ट थर्ड दोनों ही ऊपर है और ऐसे में आगे बॉल करना है, आगे पिच करना है। अगर इस फील्ड के साथ शॉर्ट बॉल करेंगे तो फिर बैटर्स इनको नहीं बख्शेंगे। यूं एक मरतबा फिर विड्थ हासिल हो गई, पूरा फायदा उठाया इफ्तिखार ने। इफ्तिखार ऑन फायर ऑलरेडी, 150 भी मुकम्मल पेशावर के। देखिए अभी हम यही बात कर रहे थे कि इस फील्डिंग के साथ ये शॉर्ट बॉल नहीं कर सकते और एग्जैक्टली वही उन्होंने किया जिसका उन्हें नुकसान होने का पूरा चांस है। और इफ्तिखार इतने एक्सपीरियंस हैं, वो ऐसी बॉलों पे रिस्क भी नहीं लेंगे और रन्स भी करते जाएंगे। 150 पर पहुंच गए हैं और अभी 34 बॉल्स का खेल बाकी है, जिसमें अगर ये दोनों रहते हैं तो ये तो 200 से भी ऊपर ले जा सकते हैं स्कोर को। शॉर्ट थर्ड मैन पर अब एक फील्डर आ चुके हैं। बैक ऑफ हैंड्स करने की कोशिश की है, रीड किया इफ्तिखार ने। दूसरा निकले वापस आना चाहते हैं, चाको चौबंद और तरोताजा हैं और फील्डर चूंकि बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर मौजूद थे, इस वजह से उनको आने में भी वक्त लगा और अच्छी रनिंग के जरिए से 1 को 2 में बदला। आप सलमान सिंगापुर की भी कोचिंग कर चुके हैं, तो ये ऐसी टीम हो जो कि आमतौर पर उस लेवल की क्रिकेट ना खोलती हो, उसके लिए शायद इतना आसान नहीं होता कि आप उनके असल टैलेंट को उभार सकें। और यहाँ पर आई एम श्योर कि वो क्रिकेट अपने क्लब लेवल पे खेलते रहते होंगे, लेकिन यहाँ पर इनके इन इमोशंस को मैनेज करना और उनसे एक डिसेंट परफॉर्मेंस निकालना भी एक आर्ट होगा इनके कोचिंग कैंप के लिए। देखिए इट्स टू अर्ली टू कॉल। इस इतनी जल्दी पहले ही सीजन में और इतने अरसे के बाद वो आए हैं, तो आपने इनको अलाउ करना है, गलतियां करने की इजाज़त देनी है, तभी ये सीखेंगे। और ऐसा कोई ऐसी टीम नहीं है कि वो पहले ही सीज़न में आए और सबको हैरान और परेशान कर दे। लाइक एनी अदर टीम, इनको वक्त चाहिए। टैलेंट है, फिट हैं लड़के, फिजिकली स्ट्रक्चर इनके हैं, क्रिकेटर्स वाले, एथलीट्स वाले, लेकिन डेफिनेटली सामने भी तो देखिए ना कौन है। पाकिस्तान की वो टीम है जो पिछले कई सालों से हर इवेंट जीत रही है, पेशावर की टीम। और सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान में कहीं अभी टैलेंट का फ्लो नज़र आ रहा है तो वो केपी में है। तो ऐसी टीम के आगे जब एक यंगस्टर्स की टीम होगी तो डेफिनेटली नर्व्स भी होंगी, क्वालिटी का डिफरेंस भी होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा लर्निंग कर्व है लाड़काना के लिए। और गैप में खेलने की कोशिश है और निकाल जाएंगे इस गैप को। साहबजादा फरहान शॉर्ट गेंद कर दी, फायदा भी उठाया, गैप भी मौजूद था, उसको एक्सप्लॉइट भी किया। साहिबजादा फरहान चुपके से
62 रन पे पहुंच गए। इफ्तिखार की बिग हिटिंग ने हर चीज़ को ओवरशैडो किया है, लेकिन साहिबजादा की जो खूबसूरत शॉट्स हैं वो तमाम लोगों के लिए डिस्प्ले पर हैं। चाहे ऑफ द बैक फुट तो कमाल ही खेल रहे हैं, पूरा सीजन भी और आज के दिन भी बहुत फ़ायदा उठाने ने हर उस बॉल का जिस पे बैक फुट पे रन्स बन सकते हैं। एक मरतबा फिर विड दिया ऑफ स्टंप के बाहर, बड़ा चेज होगा फील्डर के लिए, लेकिन दोनों को एन दरमियान से बाइसेक्ट करने में कामयाब। साहबजादा फरहान का ब्रेड एंड बटर शॉट सबको गिराता चला गया। एक और चौके के साथ 4 चौकों वाला ओवर मुकम्मल। कितनी तारीफ की जाए साहिबजादा फरहान के बैक फुट प्ले की, बहुत ही शानदार टाइमिंग और बाइसेक्ट किया फील्ड को। डीप में थे दोनों फील्डर्स, कवर डीप कवर भी थी, मिड ऑफ भी थी और सर्कल वाले फील्डर को बीट किया। ये देखिए रिप्ले पर। और सबसे खास बात है जो फोर्स जनरेट करते हैं ऑफ द बैक फुट। बैक फुट पे इस तरह के फोर्स वाले शॉट्स खेलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन साहिबजादा फरहान ब्लेस्ड हैं पावर के साथ ऑफ द बैक फुट। और इस ओवर में जो कि एक बड़ा ओवर साबित हुआ, 19 रन बने 15 के अख्ताम पर, 163 पे 2। और अचानक से इस 19 रन वाले ओवर के साथ हुआ यह है कि प्रोजेक्टेड स्कोर इसी रेट के साथ अगर चलते रहे तो वो चांद तक नहीं तो एक माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जरूर पहुंच जाएंगे। 223 के बियॉन्ड वो जा सकते हैं 12 रन पर ओवर के साथ। 8 विकेट्स इनके पास हैं और ऑलरेडी इनके पास फायर पावर है। 55 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। 232 रन अब तक का बेहतरीन टोटल है जो कि आज ही की शाम बनाए रावलपिंडी ने। नेक्स्ट ओवर इसी कॉम्प्लेक्स में मौजूद क्रिकेट ग्राउंड पे और उसको ओवरऑल करने की पूरी सलाहियत है और जरूरत भी है पेशावर को। 6 बॉलर अब तक आजमाए हैं जिनमें से कोटा मुकम्मल किया जाहिद महमूद ने 35 रन देकर 1 विकेट हासिल की, जबकि इम्तियाज अली ने 2 ओवर किया और उनको भी 14 रन देकर एक खिलाड़ी आउट करने का मौका मिला है। मुश्ताक आएंगे इन करने के लिए जो कि अपने 2 ओवर में से पहले 15 रन दे चुके हैं। $212 का स्ट्राइक रेट है इफ्तिखार का। 16 गेंदों का सामना किया और 34 रन पर खेल रहे हैं। अच्छा आगाज किया है, मौका नहीं दिया इफ्तिखार को कि वो बड़े शॉट के लिए जा सके और उन्होंने भी तहम्मुल का मुजाहरा किया है। क्या मशवरा होगा अगर आपके कप्तान मिड ऑफ या मिड ऑन पे खड़े हों और ऐसा टोटल ऑलरेडी लग चुका हो तो उसकी स्ट्रेंथ पे करने की बात करेंगे या फिर आप खुद आगे बहैसियत कप्तान मशवरा दें कि आप इस पर स्लो वन करें या यॉर्कर करने की कोशिश करें? देखिए अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉलिंग करना जो है वो टारगेट है। अगर अच्छे बॉल को स्ट्रोक लगता है तो फिर आप एज अ कैप्टन इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पिच भी बैटिंग के लिए अच्छा है, 2 बैटर्स सेट हैं, नहायत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप इन्फॉर्मेशन के साथ ओवरलोड भी नहीं करना चाहेंगे अपने बॉलर को। सो अच्छी लाइन पे बॉलिंग करते रहें। आप ये देखिए यहाँ पर मौका हो सकता था, लेकिन ये 1 बाउंस बाउंड्री होगी। बहुत शानदार प्लेसमेंट, पैडों पे गेंद था और वहाँ पर साहिबजादा फरहान जिस किस्म की फॉर्म में है वो स्पेयर करते नजर नहीं आ रहे किसी भी लूज चीज को। और इफ्तिखार उन्हें बता भी रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं कि क्या करना है। यस, 4 सदा के साहबजादा फरहान के कदम जम चुके हैं और फौरन उन्होंने पिक किया डाउन द लेग से जाती हुई गेंद को और उसको एंगल करके बखूबी इदराक नजर आता था कि फील्डर कहां पर मौजूद है। पहले उन्होंने पियर्स किया था कवर्स की फील्ड को और अब बिहाइंड द स्क्वायर ऑन साइड पर उसी अंदाज से परफेक्ट एग्जीक्यूशन से खेलने के लिए गए। Once again off the back foot, लेकिन वो पावर और प्लेसमेंट नहीं थी जो कि साहबजादा फरहान के लिए सीजन में टन्स ऑफ रन्स लेकर आई है। अपने आप को नए सिरे से दरियाफ्त किया है साहबजादा फरहान ने और अगर दिलों को गरमा देने के लिए इनकी इनिंग्स काफ़ी नहीं है तो चपाल टी मोमेंट में आप इस हल्की सर्द होती हुई शाम में चाय की चुस्की ले सकते हैं। हैप्पी टाइम्स इन कराची एंड पेशावर ऑन अ रोल। फिर स्लो वन करने की कोशिश, लेकिन साहबजादा फरहान कहां छोड़ने वाले थे, फौरन पिक किया और गैप उनको ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे एकर्स ऑफ लैंड। एक और चौका। देखिए इस किस्म की फॉर्म में अगर आप लॉन्ग हॉप्स करेंगे और दूर दूर जो है बॉल को पिच करेंगे तो बहुत सेट है बैटर और बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। आपकी फील्ड ऑफ साइड पे डोमिनेट करिए, आप ऑफ साइड पे बॉलिंग कीजिए, वहां पर ज्यादा चांस है आपके बचने का। लेकिन आप 3 डीप फील्डर्स के साथ अगर इस किस्म की बॉलिंग करेंगे और साहिबजादा फरहान की जो फॉर्म है तो फिर बचना मुश्किल। Once again down the leg side and once again शानदार आवाज, बेहतरीन कनेक्शन ऑफ लेट, मगर भरपूर शॉट के लिए जाती चली गई।
शायद अंपायर एक और नज़ारा देखना चाहें, लेकिन बज़ाहिर गेंद ऑल द वे गई है ज़मीन के बहुत करीब से फ्लैट, लेकिन मैटर करेगा कि आधे दर्जन रन्स उन्होंने हासिल कर लिए हैं बज़ाहिर। एक बार फिर उनके पैडों की तरफ बॉल और शॉट ऑफ लेंथ, और इसी बॉल का इंतजार में साहिबजादा हर वक्त तैयार रहते हैं, चाहे वो ऑफ साइड से बाहर हो, चाहे वो बॉडी के अंदर हो, लेकिन बैक फुट जो है वो टोटल कह लीजिए कि उनके अंडर कंट्रोल है। और ये देखिए, इसको इस बार पुल किया इन्होंने, और यहाँ से तो ऐसा ही लगा कि जैसे ये 6 रन हैं। देखना होगा कि अंपायर क्या डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे अंपायर डिसीजन का वेट करते हुए यहाँ से ऐसे ही लग रहा है कि जैसे गेंद जो है वो बाउंड्री के पार गिरा है, और ये 6 रन होंगे। और साहिबजादा फरहान जो है वो क्लियरली ये बॉल जो है वो बाउंड्री से बाहर उस गिरा है जाकर, और साहिबजादा फरहान के स्कोर में 6 रन और ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे बड़ी पॉसिबिलिटी है कि साहिबजादा फरहान आज अपनी सेंचुरी मुकम्मल करें, क्योंकि ऑलरेडी वो तकरीबन 80 रन पे तो पहुंच गए हैं, और 6 रन का इशारा कर दिया है अंपायर मोहम्मद आसिफ ने। और एक बॉल बाकी है इस ओवर में, तो जिस स्कोर का इफ्तिखार ने जिक्र किया था वो तो ऑलरेडी हो गया, और अभी 4 ओवर्स और 1 बॉल का खेल बाकी है। सुपरसोनिक साहिबजादा फरहान 200 के करीब का स्ट्राइक रेट, सेंचुरी का अप्रोच कर रहे हैं। 1 सेंचुरी बनी अब तक इस टूर्नामेंट में। अच्छी गेंद के साथ एक महंगे ओवर का अख्तिताम किया है, लेकिन स्काई है लिमिट इस वक्त पेशावर के लिए। 179 पे 2। Next 71 of 31, the partnership between the two. Equal share of runs, almost 34 and 35. 179, 4 overs to go. Probably looking at one of the highest scores in the tournament. Yeah, got too far back, trying to make room, and then almost went out of reach, that ball. Highest is 232 for 3. That's today. Rawalpindi versus Bahawalpur. Rawalpindi scored those runs. Just outside the, well, within the vicinity of the National Bank Stadium, but there's an oval outside. That's the venue. That's a boundary. They're just coming in so easy. Little bit of room, and if Iftikhar just throws his bat at it. In different lines and lengths there from the Larkana bowlers, but it seems like the ball has slid on a bit better in this evening game. Iftikhar really climbing into that short and wide delivery. Really spanking cut shot. Iftikhar is on a roll as well. Sahibbzada Farhan has had a terrific season across all formats. He's eyeing his 100. Iftikhar is nearing his 50. Short ball, and will beat or not. That's a bit of footwork down there by Mushtaq Ahmed Koloro. And they finish up with 2.
Iftikhar suggesting to Sabzada Farhan, it did come a bit slow. It just hit him on the splice, it looks like it. Just a couple of runs. Previously on these National Bank Stadium pitches, as we watch this effort from the fielder, did his foot touch the skirting? No. Handy bit of footwork, although modern day coaches would not like that. But I guess both these fielders were too close to each other, so the big man, the big fast bowler, just didn't dive. Yeah, he's a fast bowler. You don't want to step on the ball and get your ankle all messed up. That's a good ball. That's really a bit unfair to the bowler. Imtiaz has been good. It's been probably the pick of the bowlers. Got Haris's wicket. You get a feeling the keeper should have got a glove to it. Unlucky for the bowler. Really nicely bowled delivery, full and homing in on that off stump. Little bit of shape in as well. Iftikhar was looking to squeeze it. The wicketkeeper just a little late in getting down. He got a glove to it, but not strong enough to prevent that ball from going over the fence. This outfield is pretty quick here. You get full value for your strokes, even if they come off the outside edges. That's again very well timed. That's so well timed by Iftikhar. For a moment I thought sweeper cover had it covered, but now it goes for another boundary. Third in the over. Power of Iftikhar and the pace on the outfield really took the sweeper by surprise. He was only 10 or so yards away from that ball, with 70 yards away from the bat, but he couldn't cover that distance. Really sweetly timed by Iftikhar. Imtiaz, after bowling a good Yorker, once again went back of a length. The line was not good either. Iftikhar just freed his arms, and look at that fielder. With the single in the last 4 overs, they've given away 72 runs. 50 up for Iftikhar Ahmed with that single, and the score goes to 195 for 2. th 50 of Iftikhar's career, coming off just 22 deliveries. Larkana team, they're under the pump. They have been since the beginning. Iftikhar was once again aiming for that big swipe. Celebrates quietly. 3 overs to go. Plenty more fireworks in store from these two. Oh, nice. It was full and wide and has been put away over extra cover for a maximum. Slow delivery. Iftikhar just held his shot for a little longer. Waited for the ball to arrive and then unleashed that big swing of the bat. 200 has been brought up with still 17 deliveries to go. Look at that, how Iftikhar delayed his stroke to adjust to the pace of the ball. And as soon as that hit the middle of the bat, it was going over. .202 for 2 in the 18th over. Good chance for Farhan to get to his 100. Good chance to get the highest score in the tournament, to beat 232, which was scored earlier today by Rawalpindi. Partnership of 94, and Sabzada Farhan has only played 16 deliveries in this partnership. Iftikhar has had most of the strike. Now Farhan has got his chance. He goes big, flat and over the fence. Stunning blow from Sabzada Farhan. Not enough pace on those Larkana bowlers. And
And that length that they're bowling, Farhan was just waiting for it. Decent extension of the arms. Once again, the ball finding the middle of the bat. Yeah, that's better. Good comeback. The highest ever score in a T20 game in Pakistan is 262. Multan Sultan versus Quetta Gladiators at the Pindi Cricket Stadium. NSK 221 for 3. England versus Pakistan. Another single. Come back for the second. Yes, that's well done. Putting pressure on the fielder in the deep. Direct hit. Yes, it might go upstairs, but it looks okay. Direct hits can always be tricky, but look at the reactions around the field. The Larkana fielders are already taking to their positions. Just to be on the safe side, though, umpire has called in for the TV umpire. The kind of onslaught that Peshawar are having, all the fielders are set deep on the boundary fence, so with huge pockets of National Bank Stadium, twos are always a possibility. Sabzada Farhan drags the bat over the line. One of the rather easy decisions for the third umpire, Imran Javed. That's very straight, and that's very accurate to beat the fielder. Boundaries are coming in so easy. He's actually hitting everything so cleanly. Iftikhar Ahmed races to 63. 18 overs have been bowled. It's 215 for 2. .20 of the over, and there's some brutal striking going on here. This was a thunderous shot from Iftikhar. Looking for the Yorker, but gave Iftikhar enough length to just get underneath it. Power of Iftikhar is a bit too much. These two are too hot to handle for Larkana. He'll be just counting down on those deliveries. 2 overs to go. High in the air into the night sky of Karachi, and another maximum. This now equals the previous highest score ever on this ground at the National Bank Stadium, 221. England scored that against Pakistan not so long ago. This now is the equal best. And with some to go, Sabzada Farhan giving himself some room. Probably didn't come out right of the meat, but such is the power of the man. 95. He's now into the 90s, Sabzada Farhan. One big hit away from 100, would be the second in the tournament. And 221 is the equal highest on this ground. Again, to the right, to the left rather, of the fielder. Oh, he's stopped it, but we have to make sure that while he's in contact with the ball, is any part of his boot touching the rope. But it is, nevertheless, with that run, becomes the highest score ever on the National Bank ground. Yep, that game will go into the record books. 97, Sabzada Farhan. Probably there is a boundary check there. Third umpire wants to have a look. Zayed was really struggling to get down to this one.
Uh-oh, uh-oh. The first part was good when he pushed the ball away, but then when he dived and landed, looks like his elbow is in contact with the ball whilst his knee is touching the skirting. Umpire Imran Javed will have to make the call. He gets his hand onto the right hand onto the ball, and that is the moment where you feel some part of his left leg is in contact with the rope. And this moment as well, where he's trying to push the ball away, he's almost halfway onto the rope. This time, you get a feeling that he's not been able to stop it cleanly. All the eyes are on the big screen, including the batters, umpires, the fielders. And when he's trying to push the ball away, his elbow is touching the rope. He's all over the rope. His knee was in contact already, and then his elbows, the left elbow, whilst he was trying to push the ball away with the right one. Ali Haider will confirm the decision, and that will take Sabzada Farhan to 99. And he'll have a chance to get to his 100. 99 of just 50 deliveries. There it is. Second 100 of his career, second 100 of the tournament. Saibzada Farhan in sublime form. His supreme touch. He's looked so good. 196 is his strike rate. Just 51 balls for that 100 with 13 boundaries and 4 maximums. He's been in scintillating form across formats in this season. Has been for last couple of years as well. And that is some good reward for good, consistent batting all around. He had been terrific today. Any loose stuff, and he was not in the mood to punish. Just 51 deliveries. This also now becomes the fastest 100 of the tournament. Shot. You bowl him a full toss, and he'll send you a country mile. Wow, what a strike. Low full toss, and Iftikhar with those long levers. Just the bat swing is so amazing. You get a chance to have a look. You see how that bat and that follow through, the bat almost hitting his back and then rotating back. Such was the power generated through that bat swing. Great base as well. Wow, talk about improvisation. First looking to load up for a big one and then sees the length doesn't allow him. A gentle touch and works it to another 4. This is a huge over which comes to an end for 21 runs, 236 for 2. That is really imperious from Iftikhar. He show good examples of his power, and then a deft touch on the last delivery as well. Showing the full range of his repertoire. There you go. Sublime. Just waited for that delivery. And the bowler is absolutely helpless here. Imtiaz doesn't know what has hit him. 19 gone, 236 for 2. 5 6s can get him 100 as well. But Farhan's on strike. Gets Iftikhar on strike. We're talking about the highest ever, 262. That might not be reached in Pakistan, 262. But surely on this ground, they've easily, by a margin, crossed the previous highest of 221. Well, if Iftikhar gets 100, that record will also be under threat. 5 6s, child's play for Iftikhar because he's hit 6 of 6 against a more illustrious bowler, the form of Wahab Riaz, albeit in an exhibition game. He may just need, what, 4 6s in a couple? Yeah.
delivery. Probably that feat of 100 is now out of question, but if Iftikhar will get back, he's not keen on that third run. He definitely wants to take the strike. They won the toss today, Larkana, and they've been taking a hammering for the past 19.2 overs. They wanted to stop them at 130, and that was a long time ago. They've added 100 something today. That's not a bad over from Mushtaq Ahmed. Earlier, he bowled a very good Yorker, and now he bowls a bumper, slow bouncer, just to offer no pace to Iftikhar. And also into the pitch, the height is important as well. Look at how Iftikhar was climbing up on his toes just to make contact. Could be an interesting replay from the side. Iftikhar is a tall man. Yeah, that was beautifully bowled. That height was just under the shoulder of Iftikhar. Again, a very good ball. He's doing a very good job. Yes, the score already 239. You'd think the damage is already done. Well, it's still very important to finish well. If you hit for big sixes in that last over of the innings, you just feel the momentum is still with them. Brilliant, brilliant ball. It's bullseye. Even a striker like Iftikhar cannot do anything with it. It's good execution. Still 2 to go though. Needs to get out of the over. There you go, 1. That will just land and gone for 4. It was mighty close to that boundary, but it's a boundary. That's a 4. So 244 now. 6 away from 250. Can they get there? 1 ball to go. Yeah, once again, the bowler was not happy with the effort of the fielder. He picked it up late. It wasn't too far away from him. Just yards away. Badly let down in the field there. The Larkana boys, they've let their bowlers down. They were up against a quality opposition. They needed to be at their very best to make this into a contest. They've fallen quite short with the ball and in the field. And he smashes that over the bowler. Oh, he's dropped it. My word. This exactly shows where Larkana has been in this match. It was in his lap and he's just spilled it. A quick look at the replay to see what happened to the ball after it was dropped. Did it touch the rope or not? But nevertheless, this is a massive score. It's the 3rd highest total in the history of T20 cricket in Pakistan. Probably 2 runs will be added to that once that replay is played. But that last delivery perfectly sums up the evening for the Larkana boys. They really were up against it. Farhan, for once, not finding the sweet spot. It hit the bottom of the bat. And it doesn't get any easier than that. Regulation catch. And to make matters worse, it just hits the skirting for a boundary. 250 will be the eventual total that Peshawar would put on the board. Beg your pardon, 248 is the eventual total after the boundary. And the bowler can be disappointed, but this is a huge total already. Iftikhar unbeaten on 76. Sahibzada Farhan got the 2nd ton of his T20 career. 109 he finished with of 54 deliveries. Haris went early. Amir Azmat really kept the show going with Sahibzada Farhan. But the fireworks came when Iftikhar joined Sahibzada Farhan, and that remained till the end of the innings. Lots to look at once they finish this game and their coaches can have a word with them. They've all been put away for many runs. A wicket each for Imtiaz and Captain Zahid Mahmood.
huge task for Larkana. Peshawar have put themselves in very good position in this group. A huge total will definitely boost their net run rate, and the game between Karachi and Lahore will literally become a knockout game. Plenty hard work for the curators here. Games coming thick and fast. Sahibzada Farhan will be mighty proud of his effort. He opened the innings with Haris. He started off with his customary back foot strokes. He was really relentless in that power play. Haris went early. He goes hard from the beginning. He didn't come off today. But then Amir Azmat and Sahibzada Farhan took the charge to the Larkana boys. They were really under the hammer from that point onwards, right to the end. Amir Azmat with his long levers, putting bad balls away, and there were plenty of them. Plenty of help there from the fielders as well. Mushtaq for once taking a catch, and that's all that Larkana got, because after that it was the Iftikhar Sahibzada Farhan show. Boundaries galore. Iftikhar got to his 50. Sahibzada Farhan, some brutal ball striking towards the end. An emotional celebration of that 100. Richly deserved. Finishing touches for those massive strikes from these two. And that pretty much sums up the effort in the field for the Larkana boys. Richly deserved congratulations for Sahibzada Farhan. And let's go downstairs and join Akil Samar. He is on the field. मैन ऑफ द मोमेंट साहबजादा फरहान हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। पहले तो 20 ओवर बैटिंग करके हमारे साथ फौरन आने का साहबजादा, आपने गैप में शॉट खेले, छक्के बड़े ज़बरदस्त ज़ोरदार अंदाज से लगाए, तो जो चाहा था जिसकी ज़रूरत थी वो करके दिखाया पेशावर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले का अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। देखिए, जाते हुए हमने विकेट को असिस्ट किया था कि यहाँ पे ऊपर शॉट नहीं लगेंगे और सामने खेलेंगे, तो थोड़ा सा शुरू में थोड़ा टाइम लिए, लेकिन माशाल्लाह बाद में उसको रिकवर किए। अभी आपको जो ज़रूरत थी, एक तो इंडिविजुअली भी आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शानदार रन स्कोरिंग की और T20 की अपनी इस पावर हिटिंग की एबिलिटी को शो किया है। इस सीज़न में बड़ा माने रखेगा जो कॉन्फिडेंस जिस अंदाज से आपने आज सेंचुरी स्कोर किया इस ग्राउंड पर। देखिए, मैंने पहले भी कहा था इंशाल्लाह जहाँ भी मौका मिले, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे जिधर भी हो, तो मैं माशाल्लाह अपना 100% देता हूँ। और इसमें मेरे जितने भी माँ बाप हैं, मैं अपनी फैमिली को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिस उसकी दुआ मेरे साथ है। तो माशाल्लाह अल्लाह ने परफॉर्म कर दिया। वेरी वेल डन। लेकिन जाते जाते बताइए कि टोटल तो आपकी शायद सोच से भी ज़्यादा हो, तो बड़ी विक्ट्री के जाने पर हौसले बुलंद होंगे पेशावर के लिए? सॉरी, बड़ी विक्ट्री हासिल करने के करीब है। 249 का टारगेट बहुत बड़ा लगेगा दूसरी टीम के लिए। जी, हमने यही प्लान किया था, अगर हम टॉस जीत के तो इंशाल्लाह बैटिंग करेंगे और लंबा सा टारगेट देंगे, और इंशाल्लाह जिस तरह हमारी बॉलिंग है तो कोशिश करेंगे उनको जल्दी से कम रन में आउट करें। बहुत शुक्रिया, शानदार इनिंग्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Well, this is the third largest total in T20 cricket in Pakistan. 248. Top of the table, 262 for 3 Multan Sultans against Quetta Gladiators at Rawalpindi Cricket Stadium, followed by another big total at Rawalpindi Cricket Stadium. Quetta Gladiators getting their stuff back on Multan Sultans. But Peshawar versus Larkana, this will go down in the history books as well. What a remarkable effort by Peshawar, getting to that feat, achieving the third highest total in Pakistan in T20 cricket. The target for Larkana will be a massive 249, and we'll see how they go when the run chase begins in just about 5 minutes. That should be taken. Taken, yes. बेहतरीन शॉट, बड़ा शॉट, तगड़ा शॉट। एलिवेशन बेशुमार है और डिस्टेंस भी
fielder is getting underneath it and takes it for once. जोन में गेंद हासिल हो गई, पूरा फायदा उठाया. Welcome back once again. The news is that Peshawar is given a mammoth total, a mammoth target to Larkana to chase. 249 the target for the Larkana side. 12.45 is the required run rate. We've witnessed some quality innings. Sabzada Farhan getting 100. Iftikhar Ahmed playing a cameo. The two openers will have to compensate now. A good start is what Larkana require from these two. Imran Khan Sr. going to start the proceedings for Peshawar side. What a fantastic inning that has been from Sabzada Farhan, getting 100, the first hit at National Bank Stadium. Mohammad Akil Nakash. The two openers have a job on hand, and that would be to cash out on the power play. You've got to have a massive power play to keep themselves in the game. Required is 12.45, so you've got to keep that in mind. There's no point sticking around, saving wickets and not be in the chase. Imran Khan Sr. is all set to ball from the pavilion end, but there's a slight hold up. Don't know what it is. Something that he's probably left in that dugout, or something that is in the eye line. Oh, okay. That has to be there. You can't remove that.
think it's sorted now. Or not. Imran Khan Senior has got 99 wickets in T20. Good opportunity to get to the three figures. Here we go. Good front foot defense. So yeah, coming back to the point that when you're chasing a huge total, when you need 249 to win, you have to cash out every over, especially the power play. And that's how it will be good for them to keep themselves in that chase. You fall behind and you always be catching up. Peshawar needed to beat Larkana by 55 runs to go top the table. I guess they're going to do it more than that. .249, as we mentioned, is now the highest total. Previous was 221 at the National Bank Stadium. These are the numbers here in front of you. And the highest ever is 262 by Multan Sultans. But that is in Pakistan, not just National Bank. And he'll go for a boundary. Yes, to add on it, it's a no ball too. It was beautifully picked up by Umar. Over the head of that mid-on fielder, beautiful shot. Will give him a lot of confidence after having a rough time in the field. The need to compensate with the bat. There's an opportunity. He's got the free hit, a boundary also. And we can see a towel in. Also, so that shows that there is dew in the ground. Have a look at that for a pickup shot. Yeah, that's the no ball called by the umpire. Great pickup shot. It's never an easy shot when you play over the head of mid-on fielder. One slip in place for Imran Khan. Oh, the plan is clear. They're going to go after. They're going to try to get to that 249 mark. That will be a great effort if they're able to get anywhere close to that score, because we know what Peshawar are capable of. They've got some quality bowlers. Imran Khan Senior, definitely one of them. Abbas Afridi also. Iftikhar Ahmed. Hazim Khan. They're all good bowlers. Mohammad Imran. We'll have a look at the highest scores in National Bank Stadium again, and we apologize to our viewers that we've been building up saying 221 was the previous highest. It wasn't. 238 was. So 249 is correct. This match is the highest, but the previous highest was 238. And Shah was building it up like anything. There we go. So 238 for 3 was Islamabad United, and 221 was the third highest back then before this. I know I'm confusing you guys and I'm confusing myself. Catch it was the call, but was way away from that fielder in mid-wicket. So long story short, 248 is the highest total which is scored in this match on this ground. Yeah, let's settle on that. Larkana need 241 more runs. It's that simple. This is a good start. The intent is positive. Have a look at that for running. He's trying to save himself. Over gone, 8 for no loss.
From the far end, the University Road end, we have another Imran. After senior, this is the regular Imran. Earlier, he was known as Imran Khan Jr. He's got good back of the hand, slower one. He anyway is not an express fast bowler, but when he slows it down, it becomes very difficult to hit him out. These are his numbers. 4 for 28, his best. And 36 wickets to his name. Just a bit of bat and pitching outside leg, maybe high. Everything going against the bowler's appeal. Yeah, when pitching outside the leg stump, just a touch. Watch out for those variations from Imran. He's really good with them. He mixes them up also. Back of the hand, slow bounces. He's got everything. Oh, well done. Excellent work. Really well done. Amir Azmat, the fielder there. Now that's the difference between two sides. We saw lots of runs given in the field by Larkana, but they're not going to get free runs from Peshawar, no way, because they're a very fit side. They field well, they catch well. It's going to be a very difficult task for Larkana. If one came in, a touch. Or a direct hit would have been curtains. Well backed up by Azmat. Swing for Imran. It's a good sign for him. He just ran. They had to, because they're chasing down a big target, so you got to be running for everything. Yeah, I tell you, he wasn't in control of that shot. It's just a single. Boundaries is what they need, and they're not having them. And if you look at, there's just one that has been hit. And we're almost at the end of the second over. And the required now goes above 13. It's not going to be easy to get boundaries against this Peshawar bowling. The last delivery also, slower one by Imran. Good end to the over. 2 gone, 11 for none. Change in field. Just deep mid-wicket in place now. So probably they understand that these batters are going to go towards that mid-wicket area. They've got protection there. No, that's a good shot. He slapped that back at the bowler. No chance for mid-off. Much needed boundary to keep that chase on. A great shot, that one from Umar.
Hit it straight. Right between the two fielders. Just clearing his left leg. Covering the line and hitting it straight. It's a good shot. It's not easy playing such shots against Imran Khan Senior. This time on the onside. Good work again. That's where the difference is between two sides. Huge difference, in fact. Diving around these Peshawar fielders, they know that in a good position, but still they're giving their 100%. That's what quality sides do. That's what champion sides do. They don't take situations for granted. They're involved all the time. Have a look at the captain also. Always involved. It's good to see. I'm sure Larkana will be learning a lot from the approach of Peshawar. That's a wide. Imran Khan Senior. This is what intent does. It puts pressure on the bowlers because they know that Umar is looking for big boundaries, so he's doing something different, and in doing so, just bowling a wide delivery. That's what intent does. Another change. Deep mid-wicket is now inside the circle, and mid-on has been put to long on. Lots of changes been made by Iftikhar and Imran Khan Senior. Even the square leg fielder has now come into the circle, and mid-wicket has been sent back. It's gone through Salor. That's what he would be saying. Boundary 4. Yeah, just shuffling across. Look at that. Just heave. An inside edge, getting him a boundary. Runs is what matters, no matter how they come. The idea was right because both fine leg and square leg are inside the circle. So if you're able to connect, there's a good chance you'll get a boundary. Yeah, no timing on that either. It's got a very different feel from what regularly we see bowlers having in a power play, especially fast bowlers. So he's got two men in the deep on the onside, a deep square, and as I say it, he changes his mind. He brings one in to mid wicket, and he's pushed third back. But the ball before this, he had two men in the deep on the onside, no one in the circle in front of the square. Now he's got balanced protection. Yeah, he has that field for Umar, something that you were mentioning just. Because Umar's intentions are pretty clear. He's looking for that cow corner, that square leg area. But maybe he would look to have same field for him also. Akil is looking to go big towards mid-wicket. The fielder has been brought in the circle. Another change. Third again comes in the circle. Mid-on goes to long on. Lots of changes been made by the captain. Unusual. Chance? No. Single to end the over. It's 24 for no loss. They've all been entertained thoroughly.
Sabzada Farhan scoring 100. Iftikhar Ahmed playing a blinder. Amir Rasmat also a cameo. So they've enjoyed that inning. It was worth coming to stadium tonight. It's gone high in the air. It's taken an outside edge, but Mightline saved 3 after it. Just gone through Azam's open palms. Azam Khan, the fielder, tried. It was a difficult try, difficult catch. Running backwards, but surely an opportunity. Yeah, the first delivery of Abbas Afridi creating a chance. It was a good effort. He had to run back. They're never easy if you have to run back. Try well, almost got it. Would have been a good catch had he taken it. That's a good shout if there's no bat. That jacked in. 2 good deliveries from Abbas up front. Such a good bowling unit. Abbas Afridi, the latest one in the attack. This will definitely be going down. Bowlers having so much variations. Abbas Afridi is definitely one of them. He mixes them up well. Slower one, back of the hand, slower bounces, everything. That's a more confident shot. He's swung through and 1 bounce, 4. Yeah, that would help. There was a fielder placed at square leg, but he placed it away from him. They're off to a good start, Larkana, 30 already. Look at that, the intentions were there. Although not the prettiest of the shot, but he will take it any day if he's able to play a shot like that to Abbas Afridi. This is good cricket. After watching their fielding, I was of this opinion we might be home early or to the hotel early. But this partnership, they look good. They're hitting boundaries, they're rotating the strike, they're defending well also, even against the quality bowlers. I think they've done really well, having that start 31 for none. And now more changes being made for Umar as the mid-wicket fielder goes back on the boundary line. Third comes in, and there's a fielder at deep square leg too. During your school days, did you ever expect to go home early? Never. It's always school timing. Why do people expect to go home early in a cricket match? Yeah, I did go a couple of times. You were Sick sent. leave, You yeah. were sent, maybe, not go. Sick leave. Yeah, that would be you never showed up. Yeah, the power play is not Larkana friendly at the moment. 1 more ball to go in over number 4. Running around 8 and over. Yeah, slowed it down. That's a beautiful shot, well timed. It didn't have much pace on it. The over started well and then it's gone for a couple of boundaries. 11 of it is 35 after 4. Great shot, great partnership, building. 35 for none. Again, let's have a look. Oh, that's beautifully timed. Sliced it through the gap. Superb batting, superb partnership, just building. यादगार शाम है कराची में जहां पर इमरान जूनियर अपने दूसरे ओवर को फेंकने के लिए आएंगे एंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स लाड़काना की टीम ने अब तक एक बेहतर स्टार्ट हासिल किया है गो के अभी भी उस टारगेट के अटैक पे नहीं है उठाकर खेला लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से जाती चली जाएगी
अकील ने आते ही अब अटैक करने का फैसला किया। इमरान ने पिछले ओवर को बेहतरीन अंदाज से फेंका, पेस को चेंज किया, लेकिन यहां पर रीड करने में कामयाब रहे अकील अपनी दानिश के साथ 4 रन। एक अमूमी इंप्रेशन ये था कि ये लड़काना जो है वो अब बिल्कुल ही कुछ कर नहीं पाएगी इस मैच में, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ये देखिए खूबसूरत शॉट मिड ऑन के ऊपर से 4 रन हासिल किए और अच्छी सोच का मुजाहरा किया, जो कि क्लीशे के तौर पे क्रिकेट में कहते हैं एक चौका लगाने के बाद जरूरी नहीं कि आप उसको बैकअप करें एक और ऐसे शॉट के साथ जो कि खतरनाक हो सकता है और अपने लिए लीथल साबित होता। अब तक ही गो के ये नंबर्स अब इसको बैक कर रहे हैं, लेकिन शायद ये ट्रैक भी बेहतरीन है कि जिसके बाउंस पे आप ट्रस्ट करके शॉट खेलने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे वो इस्तेमाल जो कि अब से पिछली शामों के दौरान बैक ऑफ हैंड, स्लो वन, चेंज ऑफ पेस का फायदा रहा है, वो अब तक उतना नहीं दिखा। विथ मिली थी इस बार, थोड़ा सा चूक गए इस बार, लेकिन लाड़काना के लिए बड़ा अहम है कि वो इस मैच में कुछ ना कुछ जरूर हासिल करके जाएं। ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होगा, आने वाले दिनों के लिए, उनकी क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। एंगल बना के गेंद छोड़ती हुई जा रही थी, मकील दानिश को बना किसी फुटवर्क के रीच किया, लेकिन अब ये फुल टॉस हासिल हुई है और उसको भी सीधा फील्ड के जाने खेल पाएंगे। यस, ये बड़ा जरूरी है कि जो मोमेंट मिला है उसमें अपना खुले दिल के साथ इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए जाएं। और गो कि अभी तक तो वो, अगर आप उनके फैन हैं जो कि आज बड़ी तादाद में नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में मौजूद भी हैं, तो वो क्लियरली इस बात को तसव्वुर कर रहे होंगे कि वो फाइट पुट करेंगे, और जिसकी उन्होंने अब तक मिसाल पेश की है। और अगर ये इस बात की निशानदेही देता है कि क्या कुछ आने को है, तो अगर हम उन चांसेस को ग्रैब कर लेते और ये 30-40 रन का फर्क होता तो इन बैटिंग कंडीशंस में वंडर्स भी प्रोड्यूस कर सकते थे। वाइड बॉल लेग स्टंप के बाहर। लाड़काना और ऐसी और दूसरी टीमें जो अब इस सिस्टम में दोबारा से वापस मेन स्ट्रीम क्रिकेट में आई हैं, इनके लिए एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी हैं। हमने पहले ही बात की थी, 1 से 2 साल कम से कम इनको लगेंगे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बनाने में, खिलाड़ियों को वो एतमाद देने में कि इस लेवल पे वो खेल सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके बाद आप इनको एक मुख्तलिफ अंदाज से देखेंगे। बाउंसर अच्छा था, लेकिन इसमें लेंथ में चूक गया, जरूरत से ज्यादा उठान दे दी है, तो बैक टू बैक वाइड्स जो कि मजीद रन देंगी। चौके के साथ शुरुआत की, डॉट बॉल्स की हैट्रिक मुकम्मल की एंगल के साथ, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा शायद इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। गेंद को जल्द पटक दिया इमरान ने, इससे पहले ओवर कमिट कर दिया था डाउन द लेग साइड। जी हाँ, पुल शॉट खेलने की कोशिश की थी और फौरन ही उसकी समझ आ गई थी उनको कि ये बॉल सर के ऊपर से चली गई है। ये देखिए, शॉट खेलते ही उन्होंने एम्पायर की तरफ देखा कि अब तक शुरुआत की है इमरान खान सीने के साथ, जिन्होंने 2 ओवर में 21 रन कंसीड किए। दूसरे एंड से आ रहे थे इमरान, जो कि अब तक अपना दूसरा ओवर मुकम्मल करने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने अब तक 9 रन दिए और अब्बास आफरीदी तो अब तक ऑल पेस अटैक के साथ इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की है। पावर प्ले में, जो कि पिछले चंद दिनों के दौरान ये चौथे या 5वें ओवर तक स्पिनर को इंट्रोड्यूस कर देती थी टीम्स, शायद अब इसी सोच के तहत उतरना पड़ेगा। Once again, typical इमरान की डिलीवरी, बैक ऑफ हैंड, रिस्पेक्ट दी अखील ने। 5 ओवर का खेल मुकम्मल, 41 बिना किसी नुकसान। अगर पेशावर की टीम पे नजर डाली जाए तो एक बहुत ही तजुर्बेकार मुस्तनद टीम, कई खिलाड़ी जो पाकिस्तान खेल चुके हैं। ये देखिए, 5 ओवर के इख्तिताम पर पेशावर 43 1 थे और लाड़काना 41 है, बगैर किसी नुकसान के। तो हेड टू हेड में बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, और ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कामयाबी है एक ऐसी टीम के खिलाफ जो कि टैलेंट में और पेपर पे उनसे कहीं आगे। और एक और टैलेंटेड फास्ट बॉलर यूनिवर्सिटी रोड एंड से अपनी बॉलिंग कंटिन्यू करने के लिए आ रहे हैं। जोरदार अपील किया, इनसाइड एज मौजूद था, पॉसिबली गेंद लेग स्टंप को भी मिस करती। बड़ी एंग्विश के साथ अपील करने के लिए गए थे, लेकिन अंपायर को मुतासिर ना कर पाए, राइटली सो।
पेशावर ने आखिरी 5 ओवर में 85 रन बना के उनके बॉलिंग एफर्ट्स की लाड़काना के कमर तोड़ दी थी, लेकिन बैट्समैन जो हैं वो एक बार फिर जज्बे से उन्होंने ओपनिंग की है और एक पार्टनरशिप कम से कम बिल्ड की है। 5वें ओवर के इख्तिताम तक जो है वो हेड टू हेड में काफी क्लोज। एक और अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट बॉलिंग की बेहतरीन मिसाल क्रिएट की है अब्बास आफरीदी के। सीजन की शुरुआत भी शानदार हुई है। पाकिस्तान कप के आपको याद कराते चलेंगे जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर थे अब्बास आफरीदी, जो कि खास तौर पर इस फॉर्मेट के लिए जहां पर वो लंबे रनअप के साथ आते हैं, अपने शोल्डर का भरपूर इस्तेमाल करते हैं गेंद को करने के लिए, और इसके साथ साथ ऑफ द विकेट पेस भी इनका बड़ा शानदार रहता है। इनर थाई पे उनके बॉल लगी है, ये बहुत ही यहाँ पैड थाई पैड नहीं होता। कुछ प्लेयर्स आजकल इनर थाई पहनते भी हैं लेकिन बहुत से नहीं पहनते। बड़ी तकलीफ दे ब्लो होती है ये जब अंदर बॉल लगे ये पिछली थाई पे। और एक मरतबा फिर वही अंदाज, स्लो वन की, लेकिन अपनी चीख के साथ बैट्समैन को चिकमा देने के लिए गए थे अब्बास आफरीदी, जो कि चाहे पीएसएल हो या फिर वाइट बॉल के साथ कोई भी फॉर्मेट उन्होंने अब तक अच्छी बॉलिंग का नमूना पेश किया। और वो जो आप आमतौर पर खिलाड़ियों को ग्रेजुएट करके अगले लेवल तक पाकिस्तानी टीम में शमूलियत या फिर पीएसएल के उस स्टेज पर अपने आप को पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए एक बेहतरीन पैकेज समझे जाते हैं हर कंडीशन में। और साथ साथ इन्होंने हर फेज में अब तक बड़ी काम की बॉलिंग की है, लेकिन इसके साथ साथ शायद वल्नरेबल भी रहते हैं कि विकेट टू विकेट बॉलिंग कई मरतबा ऐसा गड़ा बन जाती है जिसमें खुद गिरते हैं। लेकिन फिर अपील कर रहे हैं और फिर इनसाइड एज है जो कि बैट्समैन को बचा रहा है, जिसको जोश है वो अपने दिल को लेकर पूरा पेश कर रहे हैं गेंद करते हुए। अच्छा नजारा है और शायद विकेट डिजर्व भी करें अब्बास आफरीदी। तमाशाई लुत्फानंदोज होते हुए ये देखिए पेस थोड़ी सी उनकी एक्स्ट्रा पेस जो है वो परेशान कर रही है बैट्समैन को। बहुत से ऐसे खिलाड़ी इनके होंगे जिन्होंने इतने तेज बॉलर शायद पहले ना खेले हों। ये ऑफलाइन बॉलिंग है, वैसे मिस आउट कर रहे हैं इनको। अगर पैड भी कहीं लगे तो कुछ ना कुछ रन्स मिलने की उम्मीद होगी जरूर। एक और तेज फायरी डिलीवरी पेस के साथ बीट किया फिर अकील दानिश को। ना सिर्फ लाइन में बल्कि इसके साथ साथ वो लेंथ भी है जो कि शायद ज्यादा हाइट हासिल कर रही है। और यही पेस अगर इन स्विंगिंग यॉर्कर की सूरत में होगा तो अब तक जिस अंदाज से हमने लाड़काना के बैटर्स को खेलते हुए देखा है वो ज्यादा मुश्किल डाल सकता है। पावर प्ले मुकम्मल होने के लिए जा रहे हैं। इस ओवर में अब तक मुकम्मल सन्नाटा तारी है, लेकिन पिछले ओवर की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ये अपने आप को उजागर रखने में कामयाब रहे हैं, लाइन में चूके थे। ये देखिए ये पिछली 2 बॉलें जो दोनों पेस से बीट किया, देर कर दी थोड़ी बैट्समैन ने बैट नीचे लाने में और उनकी टांगों पे लगी ये बॉलें। वंस अगेन बैक ऑफ हैंड स्लो वन, जिसको सिर्फ एक रन के लिए खेल पाएंगे। बेहतरीन ओवर था अब्बास आफरीदी का। पावर प्ले की बंदिशें मुकम्मल हुई लाड़काना के खिलाफ 43 बिना किसी नुकसान के। काफी तादाद में आज तमाशाई मौजूद हैं यहाँ, बड़े नाम पेशावर से, इसकी वजह से तमाशाई। और ये पावर प्ले का सिग्नल अंपायर की तरफ से। आले हैदर पाकिस्तान अंडर 19 की क़यादत कर चुके हैं पहले। जोरदार अपील, बैकफुट पे पकड़े गए, पीछे कोई लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद नहीं था। दिलकश नजारा लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए आते ही विकेट हासिल की, जैसे बखैर राग लेकर उन्होंने अपनी टीम को। अकील की रेजिस्टेंस का खात्मा। बैकफुट पे चले गए, बॉल इतनी पीछे नहीं गिरी हुई थी और बहुत शार्प अंदर आई और लगता ही मेरा ख्याल से पैड पे उनको अंदाजा हो गया था कि खतरा उनके सर पे मंडला रहा है। ये देखिए ये बॉल, नो बॉल चेक, ठीक है बिल्कुल नो बॉल नहीं है। ये देखिए आगे से ये बॉल बहुत तेजी से अंदर आई और प्लम इन फ्रंट, बैकफुट पे
कोई हेजिटेशन नहीं थी आले हैदर को इसको आउट देने में। अकील दानिश 16 रन बनाने के बाद आउट हुए। इसरारुल हक आने वाले बैट्समैन। अकील दानिश ने एक ओवर पहले ऊंचा खेलना शुरू किया था, पेस में वहां पे बीट हो रहे थे, लेकिन आते ही शिकार बने अंदर आती हुई गेंद का। दूसरा मैच खेल रहे हैं इसरारुल हक, राइट हैंडेड बैटर। इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लूप के साथ बॉलिंग करते हैं, लेकिन वहां पर गेंद एंगल के साथ अंदर आती गई। बैकफुट पे खेलने के लिए चले गए थे, मुकम्मल तौर पर इसकी लेंथ को भी बीट कर बैठे, कहीं पे भी उस पोजीशन में नहीं थे कि वो खेल पाते, और शानदार पहली गेंद पर विकेट के साथ आगाज किया। ये स्टॉक बॉल उनकी है मेरा ख्याल से, जो आमतौर पे लेफ्ट आर्म स्पिनर के पास होती है। लूप स्पिन की तलाश करता है पहले वो, और फिर ये एक शार्प बॉल विद द आर्म अंदर लाने की कोशिश करते हैं बैट्समैन को रिसीव करने के लिए। उठाकर खेलने के लिए गए, लेकिन इफ्तिखार के सर के ऊपर से खेल डाला है। दूसरे रन के लिए भी वापस आना चाहते थे, लेकिन ये सहूलत इस वक्त मैसर नहीं है। उमर खालिद और अकील दानिश ने बैटिंग की शुरुआत की। एक डिसेंट ओपनिंग पार्टनरशिप थी जिसको ब्रेक लगवाने में कामयाब रहे। इफ्तिखार का भी ऑप्शन मौजूद है आर्म टर्न के लिए, और मैच के इब्तिदा से पहले जब मुझसे बात हो रही थी तो वो इस बात में कमेंट नजर आते थे कि वो बॉलिंग करते हुए ज्यादा दिखाई देंगे, गो के आमतौर पर लेफ्ट हैंडर्स को देखते ही ऑफ स्पिनर की आमद का ऐलान होता है। यहाँ पर राइट हैंडर्स ही यकजा हैं लड़काना के लिए। सोने जैसा पहला ओवर, 2 रन लेकिन एक विकेट भी, 45 पे 1 लड़काना। बड़ा टारगेट है 249 रन का, जिसको पूरा करने के लिए अपने हौसले हारे नहीं उमर खालिद और अकील दानिश ने। पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गिरने दी, खराब डिलीवरीज को पिक किया, कई मरतबा पेस में बीट भी हुए, लेकिन इसके साथ वो पिकअप शॉट्स भी थे और कुछ ऑफ द बैक फुट खेले गए। वो पंचेस भी 4 चौके लगाने में कामयाब रहे उमर खालिद। अकील दानिश ने भी इब्तिदा के सुक्का सांस लेने के बाद उनका साथ दिया, लेकिन 43 रन तक ये चलती रही ओपनिंग पार्टनरशिप। पहली मरतबा इन सर्दियों में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर रहा है अहमद दर्जा हरारत, जो कि शायद इवन लड़काना में सुनने वालों के लिए, पेशावर वालों के लिए तो खास तौर पर जो वहाँ देख रहे होंगे कहेंगे ये तो हमारी बहार के दिन है, लेकिन कराची के लिए चूंकि बिल्कुल खुश्क किस्म की सर्दी होती है, माने रखेगा। बड़ी वाइड के साथ शुरुआत कर दी इफ्तिखार, राइट हैंडर को गेंद करने के लिए आए थे, लोअर ट्रेजेक्ट्री जाती चली गई, विकेट कीपर के लिए भी कोई मौका नहीं था, और इस एक्स्ट्रा के 4 रन के साथ 50 मुकम्मल हुए लड़काना के। बहुत ही ऑफलाइन इफ्तिखार, इब्तिदा में ही लेग स्टंप से बहुत बार, हारिस के लिए कोई चांस नहीं। ये देखिए बहुत चौथी स्टंप पे पिच हुई लेग स्टंप पे, और 4 रन के लिए। तो अगर कल आप ऑफिस से छुट्टी करना चाहते हैं, या आपको कोई काम और नहीं है, या आप फैन हैं कराची और लाहौर की राइवलरी के, तो सिर्फ एक दिन के वक्फे के बाद दोबारा ये होने वाली है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर दोनों टीम्स के लिए अहम मुकाबला होगा इसी ग्रुप से, जहां पर कराची ब्लूज लाहौर व्हाइट्स के खिलाफ उतरेगी। और उसके साथ एक और अहम मैच में कराची व्हाइट्स, जो कि पिछले मैच में ड्रामाई मुकाबले के बाद लाहौर ब्लूज से शिकस्त खा चुकी है, वो हैदराबाद के खिलाफ जाएगी। दो टीम से आगे जाने। ऑफ द बैक फुट क्रैश किया, इस विकेट का फायदा उठा के इफ्तिखार ने पहले कमिट किया था डाउन द लेग साइड, और अब इसरार के हाथों पकड़े गए इफ्तिखार। देखिए थोड़ी सी बॉल पीछे गिरी और बहुत तेजी से बैक फुट पे गए, रूम बनाया और टाइम किया इस बॉल को कवर के थ्रू, 4 रन। जैसे दुनिया ने साजिश की इफ्तिखार के खिलाफ, शॉर्ट गेंद तो खुद ऑफर की थी उन्होंने, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक मरतबा फिर गो के ये दोपहर की खूबसूरत धूप में मैच खेला जाएगा। शायद सबके लिए छुट्टी ना हो, लेकिन अच्छी तादाद में फैंस आएंगे। लड़काना के बड़े फैंस आज मौजूद हैं इस सेटिंग में।
मजीद भी गुंजाइश बाकी है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम। इफ्तिखार, स्पेलिंग की गलती इफ्तिखार की शर्ट पे। कुछ सीक्रेट मैसेज भी हो सकता है, वो क्या है, किसके नाम है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी भी मुकाबला ऑन रखा हुआ है लाड़काना ने पेशावर के खिलाफ। इनका दिल नातवा खूब मुकाबला करता हुआ 57 पे। इस ग्रुप में टॉप पे कराची ब्लूज है इस वक्त। हैरान कुन तौर पे उन्होंने पेशावर को बहुत ही बासानी हराया था मैच। 100 रन पे उनको आउट कर दिया था और मैच जीत गए थे, जबकि तमाम तर सितारे मौजूद थे इनके पेशावर के। और ये एक बार फिर तमाशाई और ज़्यादातर पेशावर के स्टार्स को देखने के लिए आए हैं यहाँ। आजम, जिन्होंने पहले ही ओवर में कामयाबी हासिल की थी, वो दोबारा पवेलियन एंड से बॉल करने आए हैं। Right, thank you very much, Amir Said. 57 for 1. They've done well. If you compare this batting effort with the fielding effort, what Larkana did in the field was just disappointing. But Umar looks good, 26 of 22. Can he battle on? Can he bat till the end? Oh, that's a big one. That's just bounced short. One bounce and over the rope. He's disappointed because it was in his zone, Umar, and we know anything on his leg side is not gonna miss out on that. He's gonna recheck it. If it bounced before that skirting or gone all the way, that's the question to be asked for the third umpire. But that's a good effort by Umar. He's in the air for a little while. Have a look at that. Yeah, bouncing well short of the boundary. One bounce and over the ropes. Right, we like Amir Said. We brought him back to the commentary box. Welcome back again. Thank you, sir. Good spirited reply by Larkana so far. This was not expected. We thought that they will be down and out after that onslaught by the Peshawar batsmen, but they have done pretty well so far. Absolutely. If you compare that to the fielding, they've done really well in the batting, especially this man on your screen, Umar. Oh, that came in sharply. Came in real sharply. Azam is the man. Right, once again, thank you very much, Amir Said. That's Salman Butt, former captain, joins in. It's been quick changes in the fielding, bowling and commentary. The intention is clear. There is a field up. There is a field. Oh, he's dropped it. He's dropped it. Amir Azmat, we expect better from you. It's contagious. The drop chances this evening. He's disappointed, rightly so, because he's considered to be a good fielder. This was a straightforward chance. Will be disappointed, definitely, Azam. He's just hurrying into the batter. Salman Butt, good evening. Good evening, Ali. And, the chase is looking pretty much in vain. If the fielding turns out to be a bit better moving forward, then Larkana, they're not on track. They're going somewhere which they don't want to go to, because this total is 186 required of 66 balls. So that is nearly 17 runs of an over. So they need to at least go down fighting, show some intent. And this one is close, and the umpire wastes no time. He just raises his finger, and Iftikhar, the extremely experienced Iftikhar, has taken another wicket. Absolutely, they've got so much variety in the bowling lineup. If Azam not going to get it, Iftikhar will get you, definitely. He will be disappointed
Scored 11 runs. Israr has to go back. And it's the experienced man, Iftikhar, getting the wicket. Of course, Iftikhar has been successful bowler lately with the Pakistan team as well in the World Cup and wherever he's got a chance to bowl. And here as well, he comes in and bowls right in the line of stumps and he hit the batter's pads. Perfect front foot, not an issue. Whole foot is behind the line. And let's move forward. And this one definitely pitching within the stumps and you could see the leg stump. Nothing except it's just missing the leg in the off stump, hitting middle. So an easy decision, 63 for 2. Yeah, Iftikhar Ahmed didn't bother looking back. He knew it's hitting the leg stump. He was great at. That's funny scene. Getting some energy in the field from the umpire. That's nice of Asif. Both of them need energy from time to time. Good start, right from the middle. Just ease it for one. Raza is the new man in. $185 more runs. 64 deliveries to get those 185 runs. Iftikhar. It's a quick one. Appealing Harris. He's pretty sure that he's got the man. Definitely umpire will refer it to the third umpire, but the body language of the batter says it's safe, but Harris was so sure that he's got the man. Meanwhile, Mohammad Asif signals a wide. And at the same time, it has been referred to the third umpire. And let's see what has excited Mohammad Haris. Meanwhile, sharing is caring. Both the umpire and the bowler. Everything good with the front foot. Let's move forward now. And it's perfectly with both his feet within the crease. No, I think that is has to be a very minute sort of a case, and Haris got pretty much excited on this. Let's see what the umpire thinks. Yeah, great take. If he doesn't even get that decision in his favor, but the effort was a top one from Haris. This will tell you a better story. This camera angle. It's no problem here. Here, no problem. The problem starts after this, and he lifts his back foot, but the front foot is well placed in the crease. And you can't have both your feet in the air at the same time. So then, obviously, the decision should be pretty much straightforward. He's taking his time. He's taking his time. Just want to make sure that he gives the right decision. Still pending. Maybe have a look at from the back side. Maybe that angle will work. Because this confuses Salman. Because if you see, the front foot is in the air and the other one is also in the air. The heel is just lifted. That's probably the thing that umpire is looking at. Look at the forefoot. Half of it is behind the line and half of it is in front of the line. But he cannot just stand on one foot's fingers. Has to be not out. Still pending. It's not out. Good decision made. In the end, science has prevailed. Some part of his body definitely had to be on the ground. Nevertheless, great take by Haris, because that was a quick delivery from Iftikhar. He's mixing them up well. It's just that variation in the pace by Iftikhar.
He's having a good day with the bat and now with the ball. Iftikhar. Well, he's having a marvelous day. What a knock that he's played. Big shots all around the park, big sixes, and a wicket. Oh, this could have been another run out, another wicket. Confusion there was. Wasn't an easy single, this one. He had to hurry in the end. Had it hit directly, this certainly would have been curtains for the batter. Direct throws always make some confusion. Well played. Especially if you are playing off the back foot. Like this ball was played off the back foot. If you can see the replay, when he started to run, this one is where he missed the throw. The batter wasn't even in the picture. But the point of when you hit the ball, and if you are running a quick single in the circle, and if you are already on the back foot, then you're already some time late. And that is what you need to observe and realize as a batter, that you're better off running or not. 10 overs gone, 67 for 2. So Ali, I saw you having some tea in the Tapal tea corner. How was it? Tasty. Catch. Azam has bowled really well, only 8 runs and a wicket in his first 2 overs. And he has been impressive. He looks a very cunning bowler. And probably has spent a lot of time playing club cricket and all sorts of cricket. And there we are back with Tapal tea and people enjoying in this corner. And in this weather, where the air is chilly, definitely it's something you would enjoy. So that is the place to be, the Tapal corner. Man, other than the tea, I like the place they've made in this inside the ground. It's very cozy, homely feeling. You're sitting in your lounge having a cup of tea. Wow, that sounds very encouraging for me to be also going there next time. I'm taking you with me. All right. What about Shaji then? He has enough. He's already had 10 or 15 cups maybe. Sitting there inside 5 or 10 minutes. Lots of tea there. So he's not going there anymore. You and Sikandar are going for sure. 181 more runs of 56 deliveries. I just love Shaji the way he eats. Well bowled again by Azam, and Ali just cannot stop being funny. And that too when talking about Shaji. Good run. Very good run. 11 gone. 69 for 2. After 11 overs, Peshawar were 109, and the 40-run difference, the wickets that had fallen were 2, and it's the same with Larkana, but a lot of difference in the runs. And from here on, Peshawar really scored really quickly, and this one has been swept away from the fielder, finds the boundary. 4 runs to the batter, and Iftikhar is not happy. He's upset. Yeah, Imran Khan Sina, the fielder there, and we know that he's not best of the fielders. It was just a quicker one again, using the pace. Very smart shot though. Lucky that it didn't go straight to the fielder. Well, you probably required a jaunty Rhodes to be in action over there. So, but he doesn't need any fielder. He's clean bowled him now. So Iftikhar has taken another wicket. That's much easier. Don't involve anybody else. 73 for 3. Change in pace once again. Last delivery was a quicker one. This one, more air, slower in pace, deceiving the batter. That's how you set the batter up. Any young off-spinner watching, this is an ideal way to set him up. The last delivery was a quicker one. This one, slower in pace, away from the batter, spun, beaten all ends up.
Umar has to walk back after playing a good knock of 33. Of just 30 deliveries, it's 73 for 3. Ligari, Imtiaz Ligari, the fast bowler, bowled well, really impressed Salman Butt. Salman Butt of this opinion that you need characters like him, well built, strong lad, but this is why he is here. Umar played good. Yes, of course, he was impressive with the ball in hand. A simple action, a good approach to the stumps, an easy go through in the delivery stride, an action where you can easily say that not many injuries would come around. So that is something good, and can bowl the heavy ball. We saw him get Haris out, who is a good puller of the ball. He plays pull shots in Australia against the good fast bowlers, and here he was cramped for room and also for time. So good things about Imtiaz. Yeah, the positive in Larkana has to be Imtiaz. Well built. We need bowlers like him. Strong. Meanwhile, Iftikhar, he is bamboozling a few batters tonight. And confusion there, but no damage done. No run, 12 gone, 74 for 3. लाड़काना का ये बिग डांस है जिसको अपने लिए उन्होंने बैटिंग के मराहल को तो मुश्किल से निकाल के साजगार बनाया, लेकिन बॉलिंग में बड़ी मुसीबतें थी। आजम ऑन द ट्रॉट अपना कोटा मुकम्मल करने के लिए जा रहे हैं, डिजर्व भी करते हैं जिस अंदाज से उन्होंने बांध के रखा है बैटर्स को। इनफरादी तौर पर इनके लिए ये बड़ा मार्का था, क्योंकि पेशावर की स्टार स्टडेड टीम है और ऐसे फास्ट बॉलर्स की मौजूदगी में जगह बनाना आसान नहीं था। अब दूसरी जानिब शायद विकेट निकालना भी आसान नहीं है। वो जो मार्जिन 40 से ज्यादा रन्स का, जितना गुड़ डाले उतना मीठा, वो उनके लिए लगता है कि आज मुमकिन हो पाएगा। फतह के लिए 175 रन दरकार हैं और ऐसा डिस्टेंस जो कि 100 से ज्यादा रन्स का हो उनके लिए बेहतरीन होगा, लेकिन ये बेहतरीन होता अगर कैच कर लेते। एक और धचका लगता लड़काना को, लेकिन गेंद हथेली पे लगने के बाद लगता है कि हवा में मुअल्लक हो गई। आसान नहीं होते, लेकिन इस लेवल पे पकड़े जा सकते थे और बॉलर किसको दोष देंगे, खुद थे। स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक जरूर थी, लेकिन कैच होना चाहिए था। आजम अच्छे फील्डर हैं, चूक के इस मर्तबा। तो 40 लाहौर के बियॉन्ड जाने के लिए, 55 कराची से आगे जाने के लिए और 100 शायद कायनात में वो चांद तक पहुंच जाएंगे, वो जितना आगे चले जाएंगे इस रन रेट के साथ। लेकिन अभी भी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, क्योंकि कल आखिरी दिन होगा इस मरहले का जहां पे डिसाइड होंगे कि कौन सी 8 टीमें पहुंचेंगी सुपर 8 में। और ये वाहिद ग्रुप नहीं है जिसमें सिचुएशन टाइट है। कल ही फैसला होगा कौन सी 8 टीमें पहुंचेंगी। 4 टीमें तो शायद कंफर्म पहुंच चुकी हैं, लेकिन मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। और ये अच्छी बात है और खूबसूरती है इस लीग स्टेज की कि कोई डेड रबर्स नहीं है यहाँ पर। एवरी गेम काउंट्स। कोटा मुकम्मल किया, आजम ने अपने होने का एहसास दिलाया। पहली गेंद पे विकेट, उसके बाद खामोशी, लेकिन सिर्फ 12 रन दिए लाड़काना 76 पे 3।
आप कराची में हैं तो बिल्कुल आइए, लेकिन आप दुनिया भर में कहीं भी हैं या पाकिस्तान भर में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये मनाज़र जा रहे हैं पाकिस्तान में PCB स्पोर्ट्स पे। जोरदार अंदाज से उठाकर खेलने के लिए गए, लेकिन फील्डर ने सेफ्टी के फर्स्ट के तकाजे के तहत दूर ही रहने मुनासिब समझा ताकि चौका रोक पाए, और मुड़कर इस तक पहुंचने का मौका मिल गया। यंग इमरान को 2 रन बनाने का मौका मिला। और अगर आप दुनिया भर में कहीं भी हैं, आप हमारी इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के YouTube और Facebook चैनल्स पे। अगर आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो आप 2 कदम आगे आए और ये नज़ारा दिखाना चाहते थे ओवर द टॉप खेलने के लिए, लेकिन सब कुछ कर दिया था वहां पर आदिल ने, लेकिन ज्यादा हवा में उछाल दिया, पलट के वार करने का मौका ना मिला मेरे को, और रजा ने लाइमलाइट को समेटा इस छक्के के साथ। आदिल अमीन मायूस होंगे। आजकल ये एक नॉर्म है, मैच से पहले हम देखते हैं कि टीमें इस तरह के कैचेस की प्रैक्टिस करती हैं, और आदिल अमीन पहली कोशिश में कैच करने की कोशिश की उन्होंने। अक्सर फील्डर्स गेंद को उछाल कर अपने सामने फेंक देते हैं और फिर वापस आकर कैच करते हैं। दोबारा देखेंगे इसे। शानदार डिलीवरी जो कि रॉन्ग वन थी, स्ट्रेट हुई और जाती चली गई विकेट कीपर के पास। छक्का लॉन्च करने के बाद इसको बैकअप करना चाहते थे, लेकिन लेंथ को चेंज किया, रिस्पेक्ट दी इफ्तिखार को। वंस अगेन स्लॉक स्वीप किया और इसके पास पूरा जेट फ्यूल मौजूद है। रजा ने 3 गेंदों पे 2 छक्के लॉन्च कर दिए और लाड़काना ने फिर धड़कना शुरू किया है सिंध और कराची में। बड़े स्पिरिटेड रिप्लाई है लाड़काना का विद द बैट, और अगर पहले छक्के में कुछ किस्मत का अमल दखल था तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये बल्ले के बीचों बीच से आई और काफी दूर गिरी। 70 यार्ड की बाउंड्री है, इजीली क्लियर कर दिया। इफ्तिखार को ये बात पसंद नहीं आई होगी, उनके फिगर्स का हुलिया कुछ बिगड़ गया है 2 छक्के लगने से। Once again against the turn खेलने की कोशिश की, दूसरी तरफ गेंद को टर्न किया इफ्तिखार ने और उनका कोटा भी अपने अख्ताम को पहुंचा। फास्ट बॉलर्स अब एक्शन में आए चाहेंगे या नहीं देखना होगा। 90 पे 3 पहुंचा लड़काना। तो ग्रुप 4 से रावलपिंडी और एबटाबाद क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनके मुकाबले मुकम्मल हुए। ये भी 4 टीम से मुश्तमिल था। और डेल्टा ग्रुप D से सियालकोट और फाटा भी क्वालिफाई कर चुके हैं। और ये वो ड्रॉप कैच आदिल अमीन का, इस तरह की प्रैक्टिस फील्डिंग साइड करती है मैच से पहले। यहाँ आदिल कैच करने की कोशिश की, पहली ही कोशिश में। बेहतर होता थोड़ा गेंद को उछाल कर वापस फील्ड में फेंकते और फिर खुद आकर कैच करते। ये एक ऐसी एडिशन है जो T20 क्रिकेट की वजह से पहले इसे बहुत गैर मामूली कैच समझा जाता था, लेकिन आजकल अगर ऐसा कैच मिस कर दें तो उसे एक गैर मेयारी फील्डिंग ही कही जाती है। इतनी इवॉल्व हो गई है फील्डिंग इस फॉर्मेट में। यस, रेगुलेशन ड्रॉप उसको कंसिडर किया जाता है और वहाँ पे और इसके साथ साथ दीगर कई टीम्स को अपने गेम को अप करने का मौका भी मिलेगा। और ये शायद स्पेशलिस्ट फील्डर के लिए या फिर कोचेस के लिए जो कि इन टीम्स के साथ आए, एक मार्का ज़रूर होगा कि वो उनको वो होमवर्क दें जो कि ऑफ सीजन में अपनी इन एफर्ट्स को करते रहें, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग निकाल लेकिन फील्डिंग टीम की स्पिरिट को हाई करती है, जिसके ज़रिए से गो के आप मैच ना भी जीत पाए हों, लेकिन इसके बावजूद आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आप खुद अच्छा महसूस करते हैं उस गेम में ऐसा परफॉर्म करने के बाद, जो कि आपको इन्वॉल्व रखता है। हो सकता है कि आप 11 का हिस्सा ना हो, लेकिन अपनी उस एफर्ट के ज़रिए से एक रन आउट, एक चौके को रोक के आपके अचानक से हौसले बुलंद हो जाते हैं। और ऐसी एफर्ट से पूरी टीम का हौसला बुलंद होता है। बॉलर का हौसला बुलंद होता है, जिसे एक टाइम पे लग रहा होता है कि शायद उसे छक्का लग गया और उसके बजाय उसे विकेट मिल जाए, तो उसका हौसला बुलंद होता है। पूरी टीम लिफ्ट अप होती है फील्ड में इस तरह की एफर्ट से। ये वो पोर्शन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट है जहां पाकिस्तान हमेशा फील्डिंग में वीक रहा है। और आपने कोचेस की बात की, तो अब कोचेस की जिम्मेदारी है कि ग्रास रूट लेवल से इस चीज़ पर काम करें और प्लेयर्स को तैयार करें कि जब वो इंटरनेशनल लेवल पे हैं तो उनकी बेस अच्छी बन चुकी हो।
आप तो खुद क्वालिफाइड कोच हैं शाह फैसल, और ये तमाम चीज़ें जो कि ख़ास तौर पर इस वर्ल्ड कप के दौरान ज़्यादा उजागर हुई फाइनलिस्ट टीम की उस एफर्ट से, जो कि ऑलमोस्ट हर गेम के बाद, क्योंकि उस वक्त तक वो तमाम गेम्स जीतते हुए भी जा रहे थे। देखिए कि अगर ये भी लग जाती तो एक मोमेंट ज़रूर क्रिएट करते हैं पेशावर के फील्डर, जो कि ना सिर्फ ये कि किसने कितने कैच पकड़े या कितना रन आउट किया, लेकिन इसके अलावा एक्टिविटी कितनी थी, एजाइल कितना था, अपने मार्क से आगे कितना बढ़ा, उन सबको मॉनिटर किया। और ये उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि जिसमें आपको एक स्पेशलिस्ट कोच हो जो कि टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करे और हर खिलाड़ी को वो इंडिविजुअल मॉनिटरिंग करके उसको, फिर हमने वो देखा कि वो अवार्ड्स की सारी सेरेमनी और उसकी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करके उसको एक तरह का बकअप करने का मौका मिला, और उसके ज़रिए से चाहे आप प्लेइंग 11 का हिस्सा ना भी हो, आपको टीम के प्रोसेस में हिस्सा रहने का एक बड़ा ज़बरदस्त चांस मिलता है। जी बिल्कुल, अब ये कोचिंग एक बिल्कुल साइंस बन गई है, इसके मेथड्स इतने इवॉल्व हो गए हैं कि आप ट्रेडिशनल जो मेथड्स थे वो अब आउटडेटेड लगने लग गए हैं। और फाइनल की आपने बात की, बॉल के बाद बात करेंगे। फील्डर डीप में है, आमिर गेंद तक पहुंचे। जो फाइनल की बात की वो एक मास्टर क्लास था टैक्टिकल अवेयरनेस का, और एक टैक्टिकल बैटल थी। ऑन द पेपर अगर आप देखें तो इंडिया की टीम मैन फॉर मैन ज़्यादा स्किलफुल थी, लेकिन जो फाइनल के लिए जो प्रेपरेशन थी और जो मेथोडिकल प्लानिंग थी वो ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़बरदस्त थी। हमेशा आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के बैटिंग करते हैं, सब हैरान हो गए जब उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के फाइनल में वो पहले बॉलिंग करेंगे, लेकिन उसके पीछे जो सोच थी, जो बाद में जॉर्ज बेली और पैट कमिंस ने बताई, वो ऐसी प्लानिंग थी जिसका इंडिया को बहुत देर में समझ आई, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो यूं इमरान का भी ओवर मुकम्मल हुआ, 5 ओवर का खेल बाकी। लड़काना स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, 95 पे 3। कुछ बात कर रहे थे उस फाइनल की कि उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह चीज़ों को असेस किया कि जो काली मिट्टी की विकेट है, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट से जो मिट्टी आती है वो आफ्टरनून में तो स्लो लगती है और ऐसा लगता है कि शायद इस पे बैटिंग मुश्किल से मुश्किल होती चली जाएगी, लेकिन अंडर लाइट्स वहाँ पे बैटिंग आसान हो जाती है। सिमिलर टू इन नेचर टू पाकिस्तानी पिचेस एज वेल। पाकिस्तान में भी आफ्टरनून में ऐसा लगता है बॉल फंस के आएगा, लेकिन वो इवनिंग में सीधी हो जाती है पिच। और फिर जो फास्ट बॉलर ने पूरा स्पेल कर दिया, बगैर मिड ऑफ का फील्डर रखे, ऑफ स्पिनर वाली फील्ड रखी, 5 फील्डर ऑन साइड पर, और जहां पे कोहली जैसे प्लेयर और केएल राहुल जैसे प्लेयर को उन्होंने ऑफ साइड पे अगले कदम पे ड्राइव खेलने का कोई मौका ही नहीं दिया, मिड ऑफ खाली होने के बावजूद। तो वो एक ऐसी स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग थी कि फास्ट बॉलर से ऐसे बॉलिंग करवाई जैसे वो कोई ऑफ स्पिनर हो, और कमिंस ने खुद किया है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इंडिया तकरीबन 30-40 रन शॉर्ट रह गई थी उस दिन। उठाकर खेला, आवाज शानदार, राब्ता बेशुमार कुव्वत के साथ गेंद को ले जाता ले गया। इम्तियाज को एक मरतबा फिर हाथ खोलने का मौका मिला, दिलकश तेज तरार चौका। लड़काना की बैटिंग की दाद देनी होगी, जितनी उन्हें फील्ड में मायूसी हुई, जिस तरह की फील्डिंग एफर्ट थी, जिस तरह की बॉलिंग में उनकी पिटाई हुई, बैटर्स ने आते ही अपने आप को अच्छा एक्सप्रेस किया, फ्रंट लेग को क्लियर किया, और जो ज्यादा तेज तरार बैट स्विंग तो नहीं था, लेकिन जो मजबूत कलाइयां और 4 आर्म्स थी, उसकी वजह से उन्हें ताकत मिली इस शॉट में और 4 रन हासिल किए। स्लो वन कर दी, गेंद नीचे भी रही। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से फाइनल को समअप किया इन सो मच सो के, जहां पर वो तो 360 डिग्री में खेलने वाले प्लेयर हैं, उनके लिए भी वो बस बल्ला घुमाते रह गए, और या कभी चेंज ऑफ पेस के साथ या भी ऐसी फील्ड के साथ वो दबाव में भी रहे, और इन दी एंड वो जो आखिरी वक्त है फायरवर्क्स की ज़रूरत थी वो उनके हिस्से में ना जा सकी, और उसके बाद फिर एक बड़े रिमार्केबल अंदाज से चेस किया। और जो मानुस लबुशैन की इनिंग्स थी वो भी एक आपको ये बताती है कि आप अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहें, क्योंकि उन्होंने इन दी एंड सारे मैचेस खेले, लेकिन वो इब्तदाई चॉइस शायद नहीं थे। एक और मरतबा मिस कर गए इस चेंज ऑफ पेस को, तो वहां पे उनको जैसे मौका मिला वो वहां पे ना सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए तैयार थे, बल्कि पहले भी कभी स्टीवन स्मिथ की अदम मौजूदगी में, कभी किसी और की जगह फुल करने के लिए वो आते रहे। जैसे ये चाय रात के इन लम्हात में आ जाती है आपकी इन खूबसूरत लम्हात को मजीद प्यारा बनाने के लिए। इट्स अ ब्रिलियंट टपाल टी मोमेंट। टपाल टी मोमेंट है, और हमने भी काफ़ी इंजॉय किया आज टपाल टी को, क्योंकि मौसम सर्द है और कुछ गले की खराबी भी है, तो मज़ा दोबाला हुआ टपाल टी का। बॉलिंग बुलसाई का हिट किया, अब्बास आफरीदी ने स्पेल की इब्तिदा से विकेट को डिजर्व कर रहे थे, लेकिन अब इनका पेस बहुत साबित हुआ इम्तियाज के लिए। पहला चौका लगा ही था, लेकिन एक ही चौके के मेहमान रहे इम्तियाज।
आपको रिवॉर्ड जरूर मिलता है जब आप इस तरह की पिच पे सीधी विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं। अब्बास आफरीदी एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं और ये इनकी हैप्पी नैक है कि जब भी वो बॉल इनके हाथ में होती है वो विकेट्स हासिल करते हैं। डेडली एक्यूरेट, लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट, और पहला चौका लगाने के बाद ब्लाइंडली स्विंग कर रहे थे और इस मर्तबा उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अब्बास आफरीदी को मिली आखिरी फतह, इम्तियाज ने बनाया 9 रन, लड़काना 99 पे 4। मुश्ताक अहमद आने वाले बैट्समैन। लाड़काना का एक मैच अभी भी इसके बाद बाकी रह जाएगा। कोयटा के खिलाफ ये उतरेंगे अपने टैलेंट को प्रूव करने के लिए। पेशावर इसके बाद जाकर अपने होटल में बैठ के शायद जिम करता हुआ या रिलैक्स करके उन मैचेस को फॉलो करेगा, क्योंकि अपना काम बखूबी कर दिया है। 6 पॉइंट्स के साथ वो जब टॉप पे चला जाएगा तो नेट रन रेट के हवाले से परेशानी बाकी नहीं रहेगी। इस ग्रुप में 3 टीमें 6 पॉइंट्स पर फिनिश कर सकती हैं पोटेंशियली, लेकिन जो पेशावर को ये विक्ट्री मिलेगी बड़ी, तो इसकी वजह से उनका नेट रन रेट बहुत ऊपर चला जाएगा। मुश्ताक कलहोड़ो 3 मैचेस खेल चुके हैं, 39, बेस्ट उनका 37 नॉट आउट है, तो एबिलिटी रखते हैं बैट से। अभी भी 4 ओवर्स और 1 गेंद का खेल बाकी है। फतह और शिकस्त से कतई नजर लाड़काना को इस मैच को एक्सपीरियंस के लिए इस्तेमाल करना होगा। टेलीविजन पर पूरे मुल्क में और दुनिया भर में ये ब्रॉडकास्ट देखी जा रही है। जबरदस्त एक्सपीरियंस है नौजवान खिलाड़ियों के लिए। एक बार फिर स्टंप्स को टारगेट किया है, लेकिन पॉसिबली बैट की आवाज लगी अंपायर को भी। अब्बास आफरीदी मुतासिर ना हो सके, लेकिन कामयाब ओवर मुकम्मल हुआ। 99 पे 4 लाड़काना। Peshawar pretty much near victory now. And there you go, slower ball, misjudged, trying to play a big shot, only managed to give it straight to Iftikhar, who made no mistake. Yeah, they've completely dominated this game, haven't they? First with the bat, 248, the highest score in the tournament, and then with the wickets, and also not allowing the opposition to score freely. And Iftikhar has featured in almost all the wickets, whether he's taking it himself, or he's involved in a catch like this. Haven't really allowed the opposition to raise their neck at any stage. Ghulam Raza is the wicket that has fallen for 20. It's 99 for 5. Quite a clinical performance so far, except for the few dropped catches, couple I think. They have dominated, as you said, in every department. Both the batters are yet to get off the mark, so brand new start for the two. $100 up for Larkana with that single. 100 for 5 in the 17th over. Once again, you see that slower one. Could not clear Iftikhar. Straight to him, easy catch. Yeah, good sharp delivery that. Was on the rise when it was approaching the batter. He just passes the shoulder, so it's very tough to put bat onto it.
There you see a quick one, short delivery, too quick for the batter. They did make a pretty good start, actually. Again, the change of pace. Again, a swing and a miss. At the 5-over mark, they were nearly, they got the same runs as Peshawar, but that was always on the cards that once they try and accelerate, they will be losing wickets against this formidable bowling line. High in the air, catch it is the call. Will take some catching. He's got underneath it and dropped. I don't know what the dive was for. He was in a very good position. Even if you're in a very good winning position in a match, for a fielding captain, this would be an unacceptable thing. You cannot display such casual efforts. It was in the air for a long time. Yes, it's tough. It's the Premier tournament. Look at that. Again, catch it is the goal. This time, cover fielder under it. Taken. Sahibzada Farhan is the catcher. Wicket number 6 walks back. Mushtaq trying different fielders, giving them a tough time, fielding practice. But, Sahibzada Farhan made no mistakes this time. Well, yes, you're absolutely right, Sikandar, that the only thing of concern for this Peshawar team, which looks so balanced, there you see the dismissal, the no ball. So that is all right. The only concern there must be, Mushtaq Ahmed is out for 2. Is their fielding? Because they are so balanced in the batting and bowling against stronger teams. If you drop 3 or 4 catches like that, it could be very, very costly. And that was caressed. Through point, beautiful shot, timed, just opened the face of the bat at the very last moment, played it late, made sure that he would clear that point fielder, and ball crossing the boundary like a flash. Yeah, they need a truckload of those. 106 for 6. The match has already slipped away, but the heavy defeat will further dent any of their chances to get anywhere further into the second round. How about placing 3 or 4 slips at test match field, just for fun's sake? With that extra pace of Afridi, anything can be possible. There you see, trying to heave that one out of the ground, only managed to scoop it in the air. Such big defeats, what do you take away from them as a losing side? You've got to move forward ahead into the tournament. You always would want to take some positives. But when you're dented that heavily, then you do feel that as a unit, as a squad, you're down and out. And to pick yourself back again and come and play a fresh game, it's not easy.
Nicely driven. Nicely driven. Beautiful shot. These can be the positives that you can take, individual positives, where a batter feels confident that he's played against the highest level, some stronger sides, and he's managed to, you know, steal some runs. Absolutely right. And as I mentioned, the opening of Larkana, look at that shot. Beautiful stand and deliver. Punch through covers. Excellent shot. The balance was beautiful. Slow one. Push to point for a single. After 18 overs, it's 114 for 6. The opening stand seconder is also a positive they can take from here. They were, scoring at a very good rate, at least at the 6th over mark. But of course, as I mentioned before, that when you are chasing such a total, losing wickets is always on the cards, and once you start losing wickets, you start losing momentum. The only thing I believe is that when you are starting off with a chase and looking to score 249 to win, it's not going to be an everyday thing that you'll go out there and chase 250 easily. But the effort in it should be there. That we were discussing in the previous game, that even 99 for 3 in 17 overs, what are you saving those 7 wickets for? Similarly here, you go out there and you give it a try. As it is, you 6 down in the 19th over, give it a try. Won't expect anything from the tail-enders or the batters going down, but power play. If you get out while trying, I don't think anyone will ask you a question, because you're chasing 250. Well, I guess it's also a matter of the level of skill as well. I think the Larkana batters are a bit short on that. But experience is experience. That's more like it. I don't mind that. Give it a try. What if they are at the end of 20 overs, 125 for 6? What are those 4 wickets for? Back of the hand. He's so good with that. Disguises so well. And the good part about Imran is the back of the hand, he pitches it in the right area. It doesn't overpitch it. It's in a short delivery. It's just correct. You're absolutely right. If you end the game on a positive note, there's another slow one, I think, getting the outside edge, and lucky that it hit the stumps. You're absolutely right. They've got to try. If they finish the game on a positive note, that would be much better than just finishing with 4 wickets in hand. Played and missed. Trying to go over the bowler's head, but nowhere near the ball. The head was in the air. The required run rate, Ahmed, right now is 114 per over. Go deal with that. Go figure it out. If there was a win predictor, I'm pretty sure it'll say 99% Peshawar, 1% Larkana. How do you calculate that 1%? 19 gone, it's 117 for 6.
There's a happy camp there with the head coach Arshad Khan in the center with the cap on. Peshawar is a happy dugout, of course, and why wouldn't they be? They've had a good tournament up till now, looking to make their place in the Super 8, which starts from the 1st of December. Captain on strike. Yes, they have had a good campaign so far. Must be pretty disappointed with their performance against Karachi Blues. They lost that match and lost it quite comfortably, actually. They got out for 100, I think. And with that sort of 101 they got, and with that sort of batting line, they must have been disappointed with that effort. And they were 55 for no loss in the power play and ended up with 101. Well, even yesterday we saw the same thing, 91 or 92 odd for 2 wickets and then 127 all out. Today AJK was bowled up for 50 odd. Last 4 balls in the match, so they've managed to play 20 overs almost with 4 wickets in hand. Captain's been cleaned up by Imran Khan Senior, and Imran Khan gets his 100th T20 wicket. 100 wickets for Imran Khan Senior. Happy man, and why not? Zahid trying to get on with things and making room for himself. Trying to give it a blow, but missed the ball altogether, and timber. Imran Khan Senior getting his 100th wicket. Milestone there. 119 for 7. Zahid Mahmood out for 9. Faraz Aziz is the new batter. A regular batsman has come out to bat at number 11 because two fast bowlers who are most probably considered all-rounders were sent up the order to score some quick runs. .129 of the last 2 deliveries. 387 required run rate. Down to the last ball of the day. 121 for 7, and this is a big win. It's a huge win for Peshawar here. Was skyrocketed their net run rate. Remember, from every group, 2 teams qualify for the Super 8. So out of the 4 groups, you'll take 8 teams into that Super 8 in the month of December, starting from the 1st. Last ball coming up, and lots of runs required. Just a tap, taking a single. His partner wants a second. That ends the game. 122 for 7 after 20 overs. Peshawar wins this match by 126 runs. That's almost another game. Big win for Peshawar. 126 runs. Comfortable victory. They have
beaten them in all departments. A few dropped catches are the only cause of concern, otherwise clinical. You don't usually see those kind of margins in T20 cricket. 126, that's a team total in certain grounds. Anyway, handshakes, lots of learning for Azam Khan and his men. Azam Khan being, of course, the coach of Larkana. The winning captain, satisfied, happy, led the side today. I don't know why. Sahibzada Farhan was doing a pretty good job, but I guess the senior pro comes in, so he gets to run and call the shots. 2 valuable points added to Peshawar in this group, which is Group A. Handshakes all around, and apart from losing the toss, Peshawar hasn't lost a moment in this match. Quick look at the batting card. Never were in the chase, Larkana. They were struggling to get amongst the runs or get some power play going for themselves at any stage of the game. They managed to score 122. This is how it looked. 33 top scorer Umar, followed by 20 for Raza. Those are the two you can talk about, but no one ever got into that top gear. Here's bowling for Peshawar. Imran Senior finishing with 1 wicket and 100 wickets, a milestone as well. Imran got a couple. Safridi got 1. Azam took a wicket, and Iftikhar, the skipper, finished with 2 for 35. That was the story of Peshawar bowling. All right, let's head down and join the winning captain. इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं, विनिंग कैप्टन। बहुत बहुत मुबारक हो। कहाँ 40 का 55 का मार्जिन का, कहाँ इतने बड़े मार्जिन से आपने शिकस्त दी है, तो जो सोच रहे थे उससे बेहतर करके दिखाया आज के दिन। जी बिल्कुल, हमारे टीम से ये हम एक्सपेक्ट भी करते हैं, क्योंकि सारे सीज़न के परफॉर्मर है और हमेशा परफॉर्मेंस की हुई है, तो हमारा यही है कि हमारे टीम इस कैलिबर के है कि वो इस तरह मैच जीत जाए। लड़काना के खिलाफ शायद आप पहली मरतबा खेल रहे हो, उनकी स्ट्रेंथ्स को आप किस अंदाज से देखेंगे, क्योंकि उनको भी शायद बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा पेशावर जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ खेल। जी बिल्कुल, लड़काना की टीम माशाल्लाह अभी उनके फर्स्ट सीज़न है और ये यंग लड़के हैं, अभी वो सीख रहे हैं, तो यही ऐसे होना चाहिए कि जो जितने साइड के जितने भी इलाके हैं, इसका आपको वहाँ से भी टैलेंट मिलने का बड़ा चांसेस होते हैं, तो अभी ये यंग है, सीखेंगे। इफ्ती मैनिया तो हमने देखा था, इस मरतबा इफ्तिखार आपके शर्ट के पीछे लेके कोई खुफिया मैसेज तो नहीं है? इफ्ती मैनिया 2.0 ना हो? नहीं, बस अच्छा है। अपना काम आपने कर दिया, अब आपको बाकी मैचेस का इंतजार करना है, इससे बेहतर नहीं कर सकते थे। अब आप रिलैक्स करेंगे और बाकी मैचेस को फॉलो करेंगे, सो ऑलमोस्ट आप अपने आप को कंफर्टेबल कंसीडर करेंगे, इससे बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकते थे जाते जाते। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू। Quick look at the highlights of the chase, which never came in as a chase. The power play got them some boundaries, but it was not enough because they started off looking at 12 plus runs and over from the word go. And then when the spinners came, wickets started falling. And of course the pressure kept building up because the required run rate was hanging on top of the head like a sword. Iftikhar was pretty good. He was amongst the wickets. He also took some catches, got brilliant runs for the side. And I guess his slow off spinners were really teasers for the bowlers. Then the fast bowlers started coming in and taking wickets, with Imran Khan Jr. bowling some change of pace, deceiving the batters. Some high catches taken inside the circle, and Larkana was just struggling in getting those runs going. It was a titanic ask, and they were always lacking. Eventually, Peshawar won that by 126 runs. This is the match summary.
Peshawar was asked to bat first, and they posted the highest total at the National Bank Stadium, 248 for 2, highest of the tournament as well, with Farhan getting 109 of just 54, fastest 100 in the tournament. Iftikhar got a quick fire 76 of just 31. Zahid 1 for 35, the captain, 1 for 51 Imtiaz. Larkana, not much to talk about, 122 for 7 in 20 overs. Bowlers, Imran Khan Senior got 100 T20 wickets, 2 for 15 is what he finished with. The captain also got 2. Peshawar won by 126. Quick look at the points table. Group A, Peshawar is right on top with a very healthy net run rate of 2.7. Karachi at number 2. And then the other teams, Lahore is still in the fight. Don't forget, every group, 2 teams, top 2, will be qualifying for the Super 8. Quick look at what's happening tomorrow, another double header. Karachi Whites and Hyderabad, that's the first encounter. And that should be at 3 o'clock, it's saying 4 o'clock. And then Lahore Whites and Karachi Blues. And that will be at 8 o'clock. So don't forget to join us at 2:43 with the show, live from the National Bank Stadium. We take a break and we come back with the 4th show.
एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको नेशनल बैंक स्टेडियम से। चौथे दिन का एक्शन तमाम हुआ और ये मैच समरी आपके सामने। पेशावर ने एक कॉम्प्रहेंसिव विक्ट्री हासिल की यहाँ लाड़काना के खिलाफ और ग्रुप में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया थैंक्स टू अ मैग्निफिसेंट 100 फ्रॉम साहबजादा फरहान। इफ्तिखार ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया और आमिर अजमत ने भी बैटिंग बहुत डोमिनेंट रही, 248 रन बनाए। लाड़काना ने बैटिंग में कुछ स्पार्क दिखाया लेकिन मौके की मुनासबत से उनका ये रिस्पांस काफ़ी नहीं था क्योंकि जितने रन्स उन्होंने बॉलिंग और फील्डिंग में कंसीड कर दिए थे। पेशावर इस ग्रुप में अब एक कंफर्टेबल पोजीशन पर आ गया है। ये उनकी तीसरी विक्ट्री थी, 6 पॉइंट्स के साथ वो अब टॉप ऑफ द टेबल हैं। खुश आमदीद कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं अहमद सईद और आज के मैच पे बात करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त और कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस थी पेशावर की। खुश आमदीद कहते हैं अहमद, आपको कैसे देखा आपने इस मैच को? जब डोमिनेंट थी पेशावर, जो एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि 2 या 3 तो उनके पास टेस्ट प्लेयर्स ही हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो जाहिर है इनएक्सपीरियंस टीम लाड़काना जिसके साथ उनका मुकाबला था, तो ये एक्सपेक्टेड था। लाड़काना को मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी स्टेज पे जब आप 5 साल 6 साल के वक्फे के बाद किसी ऐसी स्टेज पे आते हैं, बड़े स्टेज पे आते हैं, तो क्रिकेट आपसे आगे निकल गई होती है, आप पीछे रह गए होते हैं स्किल वाइज, अप्रोच वाइज। तो मेरे ख्याल से उनको मायूस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से, यहाँ से चीज़ें सीख के जानी चाहिए। एंड आई एम श्योर कि इनकी जो कोचिंग स्टाफ है उनको ये अंदाज़ा होगा कि ये 1 साल का नहीं, ये 2-3 साल का प्रोजेक्ट है, उसके बाद कहीं जाके चीज़ें जो है उनके सामने आनी शुरू होंगी। जी बिल्कुल, और इसी चीज़ का इजहार किया था कोच आजम खान ने भी मैच से पहले। लेकिन बात करेंगे साहबजादा फरहान की। अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स गुज़श्ता 2-3 साल से उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है और एक मरतबा फिर आज भी उन्होंने इस चीज़ का मुजाहरा किया। जो इनिंग्स खेली वो बहुत ही लाजवाब थी, बहुत ही शानदार बैटिंग उन्होंने की है, चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले हैं और जो कन्विंसिंगली उन्होंने शॉट्स मारे हैं सारे, कॉन्फिडेंस से भरपूर, बहुत ही अच्छी टाइमिंग के साथ, बहुत ही लेंथ को जल्दी पिक कर रहे थे। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है और फॉर्म उनकी जारी है और पिछले चंद सालों से परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। आई एम श्योर पीपल एट द टॉप वुड बी लुकिंग एट हिम क्लोजली। जी डेफिनेटली, और उनकी सेंचुरी की बदौलत पेशावर ने पाकिस्तान की हिस्ट्री का T20 क्रिकेट का तीसरा बड़ा टीम टोटल हासिल किया है। पहले 2 टोटल PSL में रावलपिंडी के ग्राउंड पर आए थे, लेकिन ये टोटल आज यहाँ पे नेशनल बैंक स्टेडियम में पेशावर ने हासिल किया 248 रन। और ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं इसमें तीसरे नंबर पर फिनोमिनल बैटिंग एफर्ट थी। लाड़काना की ना तजुर्बेकारी भी थी बॉलिंग और फील्डिंग में, लेकिन पेशावर उनको बख्शने के मूड में नहीं थे। और पेशावर की टीम जो है, हमेशा हमने देखा है कि उस रीजन की जो टीम है, चाहे KPK की हो या पेशावर की हो, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। एक सरप्राइजिंग डिफीट उन्हें मिली थी यहाँ पे इस टूर्नामेंट में कराची के खिलाफ, लेकिन अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है अमर उन्होंने। जी हाँ बिल्कुल, कमबैक तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो कराची के खिलाफ जो उनकी डिफीट है वो उनको हॉन्ट ना करे बाद में, आगे जाके कहीं डिसअपॉइंटेड होंगे उस डिफीट से। बहुत 55 विदाउट लॉस थे पावर प्ले में और उसके बाद 101 रन पे पूरी टीम आउट हो गई, जो इतनी बड़ी बैटिंग लाइन के लिए बहुत ही अफसोसनाक थी और परेशान कुन भी होगी उनके लिए। जी हाँ, लेकिन अगर आप पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र दौड़ाएं तो पेशावर इस वक्त सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में, उनका जो नेट रन रेट है 2.7 का, वो सबसे आगे। तो इसका मतलब है कि पेशावर तो क्वालिफाई कर गया, लेकिन जो कराची ब्लूज और लाहौर वाइट्स का कल का मैच है वो बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि इस वक्त लाहौर वाइट्स को जो है वो पॉइंट्स टेबल में बर्तरी हासिल है नेट रन रेट की बदौलत। लेकिन जो मैच कराची के क्योंकि 6 पॉइंट्स हैं, तो कराची इस वक्त एक आप कह सकते हैं कि पोल पोजीशन में है। अगर तो कराची कल का मैच जीतती है तो फिर वो ज़रूर पहुंच जाएंगे और लाहौर की टीम बाहर हो जाएगी। पेशावर सिटिंग कंफर्टेबली एट द मोमेंट, लेकिन कल का मैच बहुत क्रूशल होने वाला है लाहौर और कराची का। जी हाँ बिल्कुल, सनसनीखेज मुकाबला होगा और कराची जहाँ के बी टीम है, उनकी ब्लूज़ की टीम है जहाँ पे वो थोड़ी सी नए लड़कों पे मुश्तमिल है। लाहौर जो है थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके मुकाबले में, लेकिन जहाँ कभी कभी इनएक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा निडर और बेखौफ क्रिकेट खेलने में कामयाब हो जाता है। तो आई एम श्योर लाहौर को बहुत टफ टाइम देंगे वो। जी हाँ, और कल के मैचेस पर नज़र डालें, 2 मैचेस होंगे। जिस मैच का हम जिक्र कर रहे हैं वो तो शाम को मैच होगा, 8 बजे होगा, लेकिन उससे पहले भी एक मैच है जो कि कराची वाइट्स और हैदराबाद के दरमियान है। वो मैच 3 बजे शुरू होगा, लेकिन तमाम नज़रें
जो दूसरा मैच है उसके ऊपर होगा। और जैसे आपने कहा, कराची ब्लूज की इनक्रेडिबल रन है इस टूर्नामेंट में, वो सेकंड टियर टीम है कराची की, और हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेले हैं, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को अच्छा चांस दिया है सुपर 8 में पहुंचने के लिए। तो कल के मैचेस पर अमर आपका छोटा सा तबसरा चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जो सेकंड मैच है उस सारी नज़रें उसके ऊपर होंगी, क्योंकि वो डिसाइडर भी है और बहुत ही अच्छे उसमें तवक्को है कि वो मैचेस जो है बहुत ही टफ और यंग टीम है, तो आई एम श्योर कि बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलने की वो भी कोशिश करेंगे। और लाहौर वाइट्स तो जाहिर है इट्स अ बिग टीम, बिग नेम्स। जी हाँ, और इसी के साथ अमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त एक्शन आज भी हमने देखा, लेकिन कल जो मैचेस हैं वो यकीनन मज़ीद दिलचस्प होंगे, ख़ासतौर पे जो कराची और लाहौर का इवनिंग का मैच होगा, और वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। और इसके साथ ही हमारी आज की भी नशरियात का अख्तिताम होता है। वी थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंपनी एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मोर ऑफ दैट फ्रॉम टुमारो। Until then, it's good night and Khuda Hafiz from National Bank Stadium. No, that's a good shot. He slapped that bowler. That's a more confident shot. He's swung through. जोरदार अपील, बैकफुट पे पकड़े गए, कोई लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद नहीं था। The umpire wastes no time. He's clean bowled him now. ब्लॉक स्वीप किया और इसके पास पूरा जेट फ्यूल मौजूद है। बॉलिंग